Maharashtrian politicians, especially from the opposition, are habitual offenders when it comes to lingo, cultural syndrome है सर, इनका insecurity है सर. जब भी इनका misrule होता है सर, when they are in power and then where. माइक अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रियाताई सुळेंनी तो विषय मांडलेला आहे. खास करून महाराष्ट्र कर्नाटक हा प्रश्न मागच्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी सहित मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार अन्यायाने अत्याचार करते, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद केलेला आहे. हा संपूर्ण आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीने एका राज्याच्या मंत्र्यांना आपल्या राज्यामध्ये यायला बंदी करणार हे पहिलं कर्नाटक सरकार आहे. ज्या पद्धतीने कर्नाटकाच्या पोलिसांकडून, सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्यायाने अत्याचार केला जातोय, त्याचा तर आम्ही धिक्कार करीतच आहोत. पण त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांवर तोडफोडचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. कोई का बयान दर्ज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा. आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है. आपने ये सेंसिटिव विषय है, अब विषय दो राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो. दो राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है. नो. राहुल शिवाले, सीपी जोशी, सीपी जोशी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया. मोदी जी की सरकार बनने के बाद चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली है जो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिल पाई. मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 30 बेड का एक हॉस्पिटल दिया गया, जैसा उदयपुर में 100 बेड का दिया गया है. मेरी सरकार से मांग है कि चित्तौड़गढ़ में भी 100 बेड का ईसाई का हॉस्पिटल बने ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी मात्रा में वहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ कर्मचारी है. तो ऐसे में चित्तौड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बने. और प्रतापगढ़ में सरकार ने ऑफिस तो खोल दिया कर्मचारियों के लिए, लेकिन एक मांग और मेरी सरकार से रहेगी कि वहाँ 6 बेड की डिस्पेंसरी खुल जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वहाँ लाभ मिल सके. और रावतभाटा में आरएपीपी का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ भी अगर एक हॉस्पिटल बन जाएगा लेबर विभाग का तो निश्चित रूप से वहाँ हजारों लाखों हमारे श्रमिक भाइयों को लाभ मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. प्लीज बैठे. पूर्व में ये परंपरा रहा है कि उत्तर पूर्वांचल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो केंद्रीय सरकार है 90% या 80% देती है और उत्तर पूर्वांचल के राज्य 10% या 20% देती है. जब मैंने दरखास्त की रेलवे विभाग से कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में सुंगाजान और टेंगानी में लेवल क्रॉसिंग चाहिए, तो उत्तर आता है रेलवे विभाग से कि पूरा 100% जो फंडिंग है आरओबी या आरयूबी का वो राज्य सरकार से आता है. तो मेरी दरखास्त है कि रेलवे विभाग पुरानी परंपरा के तहत आरओबी और आरयूबी जो उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में है, विशेष रूप से मेरे लोकसभा सुंगाजान और टेंगानी में, उसमें भी 80-20 या 90-10 का प्रतिशत का फंडिंग का व्यवहार करे. धन्यवाद. गिरीश चंद जी. गिरीश चंद. माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे संसद क्षेत्र नगीना में एक बसी करतु रेलवे स्टेशन है. कोट द्वार से चलने वाली ट्रेन सिद्धवली जनशताब्दी जिसका नंबर 12037/12038 है, यह बसी करतु रेलवे स्टेशन से होकर पुरानी दिल्ली जाती है. इस क्षेत्र की जनता लगभग 7.5 वर्षों से इस गाड़ी की बसी करतु स्टेशन स्टॉपेज के लिए साप्ताहिक धरना प्रदर्शन भी चला रहा है, किंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस गाड़ी का स्टॉप अस्थायी रूप से इस स्टेशन पर कर दिया जाए. यदि रेल राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई तो स्टॉपेज को रद्द कर सकते हैं. ये आसपास के रेलवे स्टेशनों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से चाहूंगा
कि मेरी मांग है कि जनता की सुगमता के लिए इस ट्रेन को बसीकृत रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज कराया जाए। आपका धन्यवाद। श्री के राम मोहन नायडू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रेल मंत्री जी भी उपस्थित है, तो उन्हीं का मुद्दा है। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश रेलवे जोन का जो मुद्दा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। सर, 3 साल पहले, चुनाव से पहले रेल मंत्री जी जब पीयूष गोयल जी थे, उस टाइम उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस भी किया था, पर अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और उसके 2020-21 में बजट का भी आवंटन हुआ, फिर भी 1 पैसा भी उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ। पिछले महीने विशाखापट्टनम प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उस टाइम लोगों में इतनी ज्यादा आशा थी कि जरूर उसके बारे में कुछ बोलेंगे या शिलान्यास करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। सर, तो जरूर एक और बार रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके रेलवे जोन को शुरू किया जाए, सर, साउथ कोस्ट रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। ऑनरेबल स्पीकर सर, through you, I on behalf of my party Biju Janata Dal urge the centre, particularly Honorable Finance Minister, to withdraw the GST on Kendu leaves in greater interest of the livelihood of lakhs of Kendu leaf pluckers and associated staff. Kendu leaves, a minor forest product, is the financial backbone of about 8 lakhs Kendu leaf pluckers, binders and seasonal workers of Odisha, and mostly belonging to the tribal community and the poorest of the poor of society. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Right Act 2006. They have the right to procure and sell these products. 18% GST on Kendu leaves is affecting the trade and livelihood of pluckers. The tax needs to be withdrawn for the greater interest of the poor people in Odisha, particularly tribals. This in turn affects the livelihood of Kendu leaves, pluckers, binders, seasonal workers, and also implementation of social security and welfare schemes for them. Our Honorable Chief Minister of the Odisha state has expressed his concern and also written the same letter to the Centre and Finance Minister. Thank you very much, sir. श्री जगन्नाथ जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जो एक अत्यंत लोक महत्व का विषय है, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में इस बार अप्रत्याशित बाढ़ आई, जिसके कारण 21 जनपद के लगभग 2235 गांव बाढ़ से महरूम हो गए। हमारे सिद्धार्थनगर के 580 गांव, जिसमें इस बार पहली बार हुआ, मतलब मानसून सेशन कभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद कभी बारिश नहीं हुई थी। ये पहली बार अप्रत्याशित बारिश अक्टूबर में हुई और कुछ नेपाल की नदियों का पानी आया, जिसके कारण सड़कें टूट गईं, जिसके कारण एक लगातार 8,730 हेक्टेयर में पूरी फसल खराब हो गई और किसानों के सामने आज ये स्थिति है रबी के लिए। तो मैं मांग करता हूं कि एक केंद्रीय अध्ययन दल जाए, जिससे कि वहां के किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन करके और उन्हें मुआवजा दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक अप्रत्याशित नुकसान हुआ, केवल फसल का नहीं हुआ, घरों का हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया था, बंधे कई टूट गए, कई सड़कें हो गई। हमारा जनपद कई दिनों से प्रदेश से एक तरह से अलग हो गया था, टापू हो गया था। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर मैं चाहता हूं कि आप दें कि केंद्र से उत्तम कुमार रेड्डी। धन्यवाद। Speaker sir, through you, I wish to bring a matter of urgent public importance to the Government of India. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, Kalyan Kani block, Koyagudam block, Sattupalli block and Shravanipalli block. These coal blocks are co-located with the existing coal mines of a 100-year-old public sector coal mining company, Singareni Collieries Company, which is a profit-making public sector mining company. It has continuous profits for 20 years. In a very irrational and bizarre decision, the Government of India has announced auction of the coal blocks adjacent to the Singareni mines coal blocks. The Singareni Collieries Coal Company now supplies coal to the thermal power stations of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni Collieries Company, the coal ministry is putting up for auction
which is an irrational and objectionable decision. We demand that the auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allotted to the public sector companies, Singareni Collieries. Sir, I'd like to also bring to the government that the Honorable Prime Minister, during a visit to Telangana last month, had promised that they will not be privatized, but still the government of India is going ahead with the privatization of the coal blocks in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come. He has replied last time, but he's replied that this is a government decision. There is no logic to it. Thank you, sir. I rise to speak about shrimp industry of Andhra Pradesh. Whatever honourable member from Telangana has alleged, it is virtually and factually wrong. The auction process is going on from last 2.5 years, and it is the most transparent system which we have adopted. So far, nobody has alleged anything against the transparent system of auction. And this is also beneficial to the state. If state wants, they can participate, and there are many states, for example, where there is no Bharatiya Janata Party ruling. You please listen. No. आप बोलिए. Sir, first of all, I would like to tell about the auction process. You give me 1 minute, sir. Then auction. I will tell. Who started this? You tell. एक में play You tell me whatever is happening. This is the process of through a transparent auction method. It is happening. And as far as privatization is concerned, 51% is with Telangana government and 49% is with us. How can you privatize it? And see, this is not the question of allocating the coal blocks. It is through auction. Everybody has to participate through auction. This is the system we have adopted now. And sir, I would also like to tell, in many other states, for example, Chhattisgarh, Jharkhand, there also auction is going on. Those governments are cooperating. What is their problem? And entire revenue, sir, entire revenue through auction, it goes to the state government. The entire auction, it goes to the state government. The people who are in the coal scam, they are talking all these things. इनकी समस्या है कि 51 राज्य को क्यों दे रहे हो? जो कोल स्कैम में करोड़ों रुपए का कोल स्कैम किए थे, वो लोग ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं चाहते हैं. आपकी सरकार लाओ श्री कृष्णा. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. लंच का समय हो गया. और आज हम सबों के बीच आप सभापति की कुर्सी को जीनत बख्श रहे हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सेहत व आफियत के साथ इस सदन को आगे बढ़ाते रहें और बड़ी खुशी होती है जब मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है
और कितना खुश हूं कि आप बैठे इस जीनत भरी कुर्सी पर हैं और सारे लोग आपके ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ये बड़ा ही बहुस्न खूबी का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो, और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से आवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति महोदय, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। क्या आप इस उच्च सदन के सभापति के रूप में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमें याद दिलाया कि आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी है। तो मुझे याद आ रहा था एक अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हुआ था, मे द फोर्स बी विद यू। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने आपको चक्कर में न आने की भी सलाह दी। अभी अभी एक युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि सदन अच्छा बने, अच्छी तरीके से चले। आपकी जिम्मेदारी तो हम सबका ख्याल रखने की है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में, और मेरा विश्वास है आज जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है। एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रैवर्स की है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की। शायद यू मस्ट हैव बीन द यंगेस्ट to become a senior advocate in the Supreme Court within 11 years of your practice. मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा
अलग देखा होगा, जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थी, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से ओडिशा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में आज बताया गया सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फोर्स, अ पावर, और वो पावर आपके घर में हमने देखा। हम सबका मैं समझता हूं ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूं बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती हैं कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए या सिलेक्ट कमेटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो, और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी समय की इंपॉर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है,
आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून, और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के लिए और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने उस दिन चिंता की, आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशहित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो 2 ओवरसीज विजिट्स रहे वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहां पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब ने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूं हर मेंबर का, हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं when great people set the direction, others follow them. Under your leadership, we will work with the high ideals, high principles with which you will set the direction, and I'm sure the work of the Rajya Sabha, the work that we do in this upper house, the House of Elders, the House of States, will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I'm sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor, the last man at the bottom of the pyramid, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से आज हम सब काम कर रहे हैं कि देश में कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो। उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी।
आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Honorable former Prime Minister, Shri S.D. Devgowda ji, Honorable Ministers, Honorable Leaders of respective parties, Honorable Members. Deeply moved and touched by the indulgent words of welcome by the Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition, Leader of the House, and those who followed. Grateful to the Honorable Members of Parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august House. Terms Upper House and House of Elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. Today, as we are in Amrit Kal, we cherish one of the world's finest constitutions as our own. Members of the Constituent Assembly were enormously talented with impeccable credentials and immense experience. The Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. Honorable members, with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before. Honorable members, Constituent Assembly addressed sensitive, complex and critical issues, exemplifying sublimity, engaging in dialogue, discussions, deliberations and debate, marked with cooperative and consensual attitude. Diverse issues were traversed without there being any disruption, any rancor. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy.
Honorable members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I am sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, envisaged in Article 145(3) of the Constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A, and 9B in the Constitution, providing comprehensive mechanism for Panchayati Raj, municipalities, and cooperative societies. Honorable members, in similar vein, the Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above. On August 13, 2014, the Loksabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014, with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription. After 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation, the President of India, in terms of Article 111, accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015, by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history,
where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Loksabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the Parliament now for over 7 years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I am sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety, dignity, and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietus to public display of adversarially challenging stance, trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honorable members, as Vice President, I had the honor to represent the country at the India-ASEAN and East Asia Summits in Phnom Penh, Cambodia on November 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony in Doha, Qatar on 20th November 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders, and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all, in togetherness, optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। I am sharing with you, honorable members, as this session commences, all members will be aware that India has taken over the presidency of the G20 with effect from December 1, 2022. This is a matter of great pride for the entire nation. It is also occurring as we welcome Azadi Ka Amrit Mahotsav.
The G20 summit will, of course, be an unparalleled event in our diplomatic history. What is noteworthy, however, is that the almost 200 events at various levels will be spread across the length and breadth of the country. It will provide an opportunity to showcase India's rich and diverse culture, to demonstrate the vigor of our democracy and to highlight the progress of our development. We should all appreciate that broad sections of the society are being involved through a Jan Bhagidari approach. During the challenging times in global affairs, it is appropriate that we have chosen the theme, I quote, "One Earth, one family, one future," unquote. This is much in keeping with our traditional belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Such a conviction of our global oneness will surely guide the shaping of the agenda and achievement of outcomes. I am sure that the entire House joins me in expressing our fullest support for the success of India's G20 presidency. The House stands adjourned for 1 hour. समिति के सभापति रहे। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री रूपचंद पाल का निधन 85 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2022 को कोलकाता में हुआ। श्री गोविंद चंद्र नस्कर पश्चिम बंगाल के बनगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री नस्कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री नस्कर ने 4 कार्यकाल तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था और उन्हें पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, शिक्षा, सुंदर वन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गोविंद चंद्र नस्कर का निधन 81 वर्ष की आयु में 2 सितंबर 2022 को कलकत्ता में हुआ। श्री थान सिंह जाटव राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थान सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य थे। थान सिंह जाटव का निधन 88 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2022 को जयपुर में हुआ। मानिक राव एच गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गावित ने 15वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया था। वे आचार समिति के सभापति भी रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री गावित ने गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री गावित ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री मानिक राव एच गावित का निधन 87 वर्ष की आयु में 17 सितंबर 2022 को नासिक में हुआ। श्रीमती जयंती पटनायक उड़ीसा के कटक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा तथा ओडिशा के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती पटनायक प्राक्कलन समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, शहरी ग्रामीण विकास संबंधी समिति की सदस्य रही। वे 1996 से 98 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती जयंती पटनायक का निधन 90 वर्ष की आयु में 28 सितंबर
2022 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री जी कृष्णा आंध्र प्रदेश के एलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे एक लोकप्रिय अदाकार भी थे। सुपरस्टार के नाम से लोकप्रिय श्री जी कृष्णा ने 5 दशकों में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। श्री जी कृष्णा का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2022 को हैदराबाद में हुआ। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी तथा अपने पूर्व 8 साथियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है।
इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई, इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की, फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला। इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition. माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं, वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है।
संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकालें। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद दो सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है। इसीलिए तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी फाइनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही हैं। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तर्कों में ताकत रहती है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई।
हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं, आप इसे अच्छी तरह समझे कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कई जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, ज्वाइंट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो। राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकंड चेंबर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकंड चेंबर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्राइन। Just now I have informed the Secretary. First of all, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, I extend warmest felicitations to Your Honor for being elected as the Honorable Vice President of India, as well as taking over the charge of the Honorable Chairman of this august House. For the past 4 years, we have experienced your style of functioning when you were the Honorable Governor of West Bengal. And personally speaking, I got the opportunity to exchange a few letters with you on some legal and constitutional issues, from I could understand that my friends who used to tell me that this governor is a constitutional expert
and a legal immunity. I could find from the expressions made by Your Honor in those communications, actually that belief was further strengthened. Now that Your Honor has taken over the charge of this August House, we submit to Your Honor with all grace that from now on we believe, हिंदी में तो कहावत है कि आप आए तो बाहर आए, तो we will expect that with your elevation to this position will help strengthen the conducive atmosphere of this August House, and both the Treasury benches and the opposition bench will get adequate opportunity in the deliberations to be made on various issues, bills, etc. Now, I have some suggestions to make for your kind consideration. हमने देखा कि लोकसभा में कुछ बिल, कुछ मुद्दा बहुत देर तक चर्चा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि हम राज्यसभा में उतना समय हम लोगों को मिलता नहीं है, जो कि जरूरी मुद्दा है देश के लिए, वो मुद्दा को जरा ज्यादा समय तक होना चाहिए। खास करके जो छोटे पार्टी है उनको 2-3 मिनट समय मिलता है। हम भी कभी कभी कुर्सी में बैठते हैं एज वाइस चेयरमैन। दिस टाइम ऑल्सो यू हैव मेड मी वन ऑफ द वाइस चेयरमैन इन द पैनल। सो छोटे पार्टी के लिए बहुत दर्द होता है, महसूस करता हूं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए समय, नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा का रिलेशन, वो लोकसभा बने रहेगी, राज्यसभा पर लोकसभा ना बने, ये हमारा आशंका है। जिस तरह समय कम होते जा रहा है धीरे धीरे, मैंने पिछले 11 साल में देखा, तो इसको मेरा आपसे निवेदन है मेरा। दूसरा, जैसे कि हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया कि स्क्रूटिनी ऑफ द बिल्स, that is very important by the standing committees and at times by the select committee also. This is my second suggestion. And the third suggestion is, because it is required for better legislation, unless the bills are scrutinized properly, either by the standing committee or by the select committee at times, then mere discussion will not be helpful. Our party's further suggestion is that we require one short duration discussion or calling attention, either or, per week. Half an hour discussion or the short duration discussion or calling attention. And there is rule 267, which is very sparely adhered to for reasons not known to us, but there was time we have experienced that on greater issues, national issues, discussion on under Rule 267 was allowed very frequently. My only suggestion would be that at least per session, one issue under 267 may be taken up. Yes. This is my suggestion. And the opposition voice, in a democracy, as we know, the voice of dissent is also to be listened. Otherwise, the concept of or the idea of participating in democracy will be a futile exercise. With these words, I wish you all the best for the coming years. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I bestow upon you my profound wishes profusely on behalf of the DMK party on your assuming the chairman of the second chamber in the parliament. Sir, when our party leader,
and Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has met you to congratulate you on your having been elected as the Vice President. You have expressed your wishes how to run the House, and he has assured you that DMK will extend its fullest cooperation in running a smooth House. And I stand by his words, sir, and I assure you again on behalf of the members of my party here that we will ensure that we will cooperate in all the ways for a smooth running of the Parliament. Sir, you are the 14th Vice President of the largest democracy in the world. Nowhere in any other democracy does this system exist. By virtue of being the Vice President, you are a part of the executive. And as per the Constitution, you are the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and by that, you are a part of the Parliament. So you wear two caps. You have dual capacity. You are a Vice President and part of executive, and you are part of the Parliament. Sir, everyone knows very well that you are an expert in the Constitution. You are thorough with the Constitution. For your legal track record is a very good example of that. And now we know, sir, during the intercession period, after you have won the elections, every day you were here in the Parliament, attending the office, and now we are sure that you are thorough with the rules of the procedures and rules of conduct in the Rajya Sabha. Sir, we expect a lot from you. We expect you to be impartial. The opposition parties should have the equal share as that of the treasury benches, and the numbers of the members in the House should not decide the quality of the debate. Sir, I have met you twice at your residence and yesterday in the BSc. And both the three occasions have made me to realize, which was very consoling, that you have very great concern for the smaller parties in the Parliament. The nominated members, the independent members, and members who represent the smaller numbers in the party. Their party may be bigger outside, but their numbers will be lesser here. So you said that time should be distributed to all of them, and that was a great consolation to all of us, because we were suffering all these days only because of that. Sir, we hope that the coming days would be very bright. Sir, India is the largest democracy, and the Parliament is the debating forum. And you asked me when I met you first, what is the way to avoid members to come into the well of the House? So you have inferred rightly what is happening here than what should not. So I told you very simply, if we are heard, we won't be compelled to come to the well of the House. Beautiful. Members of the Parliament come here to voice the people, their issues, their concerns. And we are not, when we are not heard or when we are not led to speak, we have to resort to democratic process of coming to the well that has happened for years together. So, sir, I think whenever we have an issue and we rise to say something, if we are heard for a minute or two, automatically we will cool down since we have let out our feelings. Sir, we have very much hope upon you, sir. And I should say that Maya Angelou, when Mr. Clinton took his office, what she said, the great African-American poet said, sir, with the grace of you. Z, capital H, clause C and clause D of that definition. That is the Constitution of India. Article 243, capital Z, capital H, and subclause C and D. Subclause C of the provision clearly defines what is a cooperative society. Means a society registered or deemed to be registered under any law relating to cooperative societies for the time being in force in the state. And multi-state cooperative society, as rightly Honorable Speaker has just now mentioned, it is as per the law passed by the Parliament, and it belongs to the Union of India. My technical point is, this bill is against the spirit of this definition incorporated in Part 9B of the Constitution, that is newly added amended provision, the cooperative societies. A chapter is also there.
in which there is no particular specific provision by which a cooperative society which is incorporated under the state law can be merged into a multi-state cooperative society. That is my technical objection, for which a particular, because Chapter 9b, a newly added chapter in the Constitution, is with a specific provision to distinguish between a cooperative society of the state and a multi-state cooperative society being governed by the Government of India or the Union of India. This is the clear distinction by which a cooperative society is being governed by the state legislature or an act of the parliament by the multi-state cooperative society, and another one is by the state legislature or the legislative assembly. Here in this case, you may kindly see, my basic political point is, it is against the federal principles of the Constitution, because the federal structure has to be protected. Here in this case, at any time, see clause 6 of the bill. Sir, you have rightly pointed out clause 6 of the bill. If you go through the clause 6, it is very interesting that it is indirectly the central government is encroaching into the rights of a state cooperative society. How it is see in clause C, in section 7 of the act is to be amended, in which a new provision is being, any cooperative society may by a resolution passed by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting at a general meeting of the society decides to merge into an existing multi-state cooperative society. This is the provision by which we are disputing. That means a state cooperative society can at any time be merged into a multi-state cooperative society, but the state cooperative society is being governed by a law passed by the state legislature, and it is indirectly coming into the domain of the Union of India, by which it is against the basic spirit of the Constitution, by which Part 9b of the Constitution is being incorporated as an amended chapter. That is a technical objection which I would like to make. And second one is, so and 243, along with this 243, another provision also, sir, one second. In 243 ZI, that is very clearly what is the incorporation of a society. What is an incorporation of a society under the state law is also well mentioned in 243 capital Z capital I. Incorporation of cooperative subject to the provisions of this part, the legislature of a state may by law make provisions with respect to incorporation, regulation and winding up of a cooperative society. That is also being governed by a state law or the legislative assembly's law made by the state legislative assembly. So when a particular specific provision regarding the state cooperative society and distinctly a multi-state cooperative society is there, here indirectly the Union of India, the Government of India is coming with a legislation with an intent to make all the state cooperative societies be merged with the multi-state cooperative society, by which the taking the right of the state governments, it is against the federal character and the federal polity, which is a basic character of the Constitution. The basic features of the Constitution cannot be amended. That is why I am saying that it is outside the scope of the legislative competence of this House. Hence, I am opposing the introduction of this bill. Thank you very much, sir, for providing this much of time. माननीय मंत्री जी, एनके प्रेमचंद्र जी जो विषय उठाया कि कोई भी सोसाइटी को, एक मिनट बस मैं मंत्री जी को, कोई भी सोसाइटी को जो विषय उठाया गंभीर कि राज्य की कोई भी सोसाइटी को क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल सकते हैं, ये अधिकार इसमें ले रहे हो क्या? आप जब भाषण, अभी नहीं बोल रहा मैं, जब बोले तो ये पॉइंट क्लियर करना। सी थॉमस जी नो, डी रवि कुमार जी नो, मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill, as this bill violates the object of the 97th Constitutional Amendment, Article 243 ZI, inserted by the 97th Constitutional Amendment Act 2011 and Article 43B of the Constitution. Mr. Speaker, sir, with your permission, I will point out to 5 specific clauses of the bill which are beyond the legislative competence of this House, and therefore we are opposing the introduction of the bill. First, clause 6... अभी तो आप विद्वान है, अभी तो केवल इतना ही डिस्कस करना है अपन को कि संसद को इसकी विधायी क्षमता है या ना। जब आप पूरा विषय जब इस पर डिस्कस हो तो पूरा स्पीकर साहब, मैं वही प्रावधान के और आपका ध्यान दिलवा रहा हूं जो प्रावधान
सीधा सीधा इस सदन के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। मैं उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। फर्स्ट, क्लॉज 6 of the bill inserts subsection 10 into section 17, creating an ambiguity by allowing any cooperative society to merge into an existing multi-state cooperative society. This is beyond the legislative competence of the Union, as state cooperative societies are within the exclusive jurisdiction of the states. Number 2, Mr. Speaker, sir, Clause 13 substitutes Section 35 to now prohibit the redemption of shares of multi-state cooperative societies without the approval of the government. This strikes at the very heart of the principles of autonomous functioning of cooperative societies, which the 97th Amendment sought to introduce by virtue of Article 45B of the Constitution. Third, Clause 17 completely usurps the object of the Parent Act as well as the 97th Amendment by substituting Section 45 with a central election authority to be appointed by the central government. Fourth, a fund is sought to be created by virtue of Clause 24 of the bill, inserting Section 63A, 63B and 63C into the Parent Act. Again, by putting an additional burden on cooperatives, infringes upon the cardinal principle of autonomous functioning as provided in Article 43B of the Constitution. Finally, Mr. Speaker, sir, and I thank you for your indulgence, Clause 45 provides for an overriding of the board and appointing an administrator in its place who may not even be a member of the society. This clause also substantially contravenes the 97th Amendment to the Constitution. Mr. Speaker, sir, I would very, very humbly like to urge the Treasury benches that this bill should be withdrawn, it should be reconsidered, because it violates the federal spirit of the Constitution. It actually attacks the federal spirit of the Constitution with a sledgehammer. Thank you very much, Mr. Speaker. Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, I rise to oppose the introductions of the bill under the nomenclature of Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 under Rule 72/2. Sir, already the explicit reasons of opposing the legislative document has been deliberated by our colleagues. Sir, I would like to draw your attention that cooperative society is a state subject under 7th schedule via NT 32 of the state list in India in the Constitution. It has been already inserted. So it is basically a state subject. Absolutely that you are also raising a very pertinent argument which also needs to be delved into. But here in this issue, so there is a clear indication that the central government has been encroaching upon the territory of the state government. That is why Euror and the uproarious protestation has been cropping up across the nation. Sir, because this government has always been pleading for cooperative federalism, so this should have been reflected before the preparation of this legislation. I do not know whether all the stakeholders, I mean state governments, have been consulted upon before the preparation of this legislation or not. Sir, in the Cooperative Rehabilitation and Construction Fund to be constituted according to this bill, the profit-making multi-state cooperative has to pay 1 crore or 1% of the net profit. Strangely, the government is not paying a single paisa. This is illogical way one profit-making cooperative society shall pay for the revival of another loss-making cooperative society. This does not happen in the Companies Act also. So that is why, sir, we are opposing the bill, because the central government has empowered itself with the vast powers under the present bill. This may lead to concentration of power with the central government, which may impact the autonomy and functioning of multi-sectoral cooperative society and may create potential for misuse. Sir, take for example, under the present bill, the cooperative ombudsman will be appointed directly by the center without any apparent monitoring system to prevent corruption.
and ombudsman is supposed to be unbiased. Sir, हो गया. सर हो गया सर हो गया सर एक मिनट सर हो गया सर हो गया सर हो गया सर an ombudsman is supposed to be unbiased and keep a check on the government by preventing them from abusing power. However, where an ombudsman is appointed directly by the government itself, it creates scope for undue influence over the decision of the ombudsman. That is why, sir, my only submission before you and the government, that given the intricacies, given the ramification and encroachment upon the state territory, this bill should be referred to the standing committee, sir. This is my only submission before you, so that it could be further scrutinized and all the controversies could be wiped off before presentation of the bill afresh. A.F. Arif ji. Cooperative Societies Amendment Bill 2020. As per the constitutional list and also judgment from Supreme Court, the central government can make any law without the consultation of the states in cooperative societies. The amendments in the bill is a proposal for the complete centralization of authority, and this is a frontal attack on the federal principle of our constitution. Necessary consultation is needed of the state governments. So I also support the members who are raised the arguments against the introduction of the bill. The bill may be sent to the subject committee, concerned as a committee. Sogat Rai ji. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022. Originally, in 2002, when the bill first came, it was intended to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperatives as people's institutes. But it seems that with this bill, the central government is planning to take away the powers of the state government with regard to cooperatives. So it has 4 proposals. One, setting up of cooperative election authority. Earlier, cooperative elections were looked after by the state government. It takes that away. 2. No. Sir. चलो आप मैं भी कोऑपरेटिव में रहा हूँ, इसलिए मैं भी कोऑपरेटिव के सिस्टम को जानता हूँ. मैं जानता हूँ, आप बहुत एक्सपर्ट हैं. कोटा में जो कोऑपरेटिव बना उसमें आप मेंबर थे, अब सेक्रेटरी भी थे. मुझे पता है सर. तो आपके बारे में हम लोग सब कुछ जानकारी लेके ही बोलते हैं. Sir, they are proposing a cooperative revival fund. And 3, as Adhi mentioned, they are planning to set up a cooperative ombudsman. 4, they are increasing monetary penalties on multi-state cooperative societies. Sir, एक ही चीज आपको संज्ञान में लाऊं कि 2011 में 97 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सर, उसमें क्या बोलता? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन करेगा? ये स्टेट करेगा. ये क्लियरली मेंशन्ड है. ये कॉन्स्टिट्यूशन अपन इस पे डिटेल डिस्कस हो जब कर लें. सर, 1 मिनट में खत्म कर दें. एंड दी 243ZR gives an application to multi-state cooperative societies. ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाए. ये बिल में बोला गया, बिल में ऑब्जेक्शन रीजन में बोला गया कि वो अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, in view of the insertion of the said part, it has become imperative to amend the act. It's not clear to me how the act is related to the constitution amendment. 2011, the amendment came. This government has been in power for 8 years. They have not amended. Suddenly, Mr. Shah comes forward with amendment of this. Sir, this bill impinges
on the rights of the state. It impinges on the right of people to form cooperative on their own will, and it basically will act in bringing more control over multi-state cooperative societies by the central government. I am totally opposed. It's undemocratic, it's anti-constitutional, and it violates the spirit of cooperatives and cooperation in the... So send it to a standing committee, please. You have the power. If you write one line, then everything will go to standing committee. ये आप कर दीजिए. I am not a lion like other members. I am on a point of common man's view. This Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 was stoutly opposed, being opposed by me, because of the reason. Sir, actually, it gives an impression as though the chairman and vice chairman and members and the secretary are just selected by the central government only. There is no democratic policies or principles adopted. Yes, sir. That is why the objection is there is no point of view from the democratic elected public. It is intended for the betterment of opportunities that has been extended to the... No, this is nothing but... I will conclude. Don't worry. I am not going to intrude in any other thing. Actually, the common man has got the opportunity by using the cooperative movement. He has to say what has to be served by the government by distributing the usual way of small helps by way of cooperative movements. But this movement is totally, it has to be reckoned by democracy means only. But there is no democracy. Actually, government is making everybody, the heads of the institution are appointed by the government only. This is not fair. So that is a main objection from us. This may be not, since it has to be referred to standing committee. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्यों द्वारा कुछ प्रश्न आए हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि संसद की क्षमता इस विधेयक को लाने की है कि नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था कि स्टेट के पर यह हमला हो रहा है। मान्यवर इस प्रकार का नहीं है। एक राज्य में जो सहकारिता की सोसाइटी काम करती हैं वो राज्य की होती हैं, और एक राज्य सहकारी समितियों के बहुराज्य सहकारी समिति में विलय का प्रावधान पहले से है, परंतु ये राज्यों के सहकारी सोसाइटी में नियमों के अधीन ही है। 2002 के अधिनियम में भी राज्य सोसाइटियों के बहुराज्य सोसाइटी में परिवर्तन करने का प्रावधान पहले से ही आपके यहाँ है। दूसरा, एक प्रश्न आया कि संविधान के 97 संशोधन को हम उच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में ये निर्णय दिया गया, ये संशोधन बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होगा, इसलिए इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, हमारे यहाँ चुनाव प्राधिकरण का जो सवाल आया है, ये प्रावधान में संविधान के 97 संशोधन के अनुसार है, और शेयर्स के मोचन का जो प्रावधान अंकित मूल्य पर प्रस्तावित है, जो कि सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, ये सहकारी समितियों के उद्देश्य केवल एक राज्य तक ही सीमित है। वो सूची 2 राज्य की प्रविष्टि 32 में आती है एवं राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीकों द्वारा पंजीकृत की जाती है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए है जिनके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती है और केंद्रीय पंजीयक द्वारा इसके पंजीकृत किया जाता है। यह विधेयक
पूर्णतः संसद की विधायी क्षमता में है। यह विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत प्रस्तावित है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 व उससे पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 में भी इस प्रविष्टि के अंतर्गत संसद में ये पारित किए गए हैं। अतः ये विधेयक संसद की विधायी क्षमता में है। बाकी प्रश्नों के बारे में विधेयक पर खंडवार चर्चा जब होगी तब उसके उत्तर दिए जाएंगे। अतः मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। बात करेंगे। आप सबसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहे। नहीं, आपको सबसे विचार करेंगे इस विषय पर लाने के पहले, फिर विचार करेंगे। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। अब मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। आइटम नंबर 14 नियम 377 के अधीन आज सभी मामले बोलने का मौका मिलेगा। 377 के अधीन श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। The prime reason for India's poor performance in combating air pollution is the insufficient capacity building of municipal corporations and district subdivision administrations under the National Clean Air Program. Sir, reportedly most of the cities mandated to submit their respective city action plans have only replicated each other's initiatives. Some local governments have either underspent or diverted the majority of funds towards projects not at all related to the National Clean Air Program. Comprehensive monitoring mechanisms must be developed by the Union Government to prevent such activities of the local governments. From the financial year 2022-23, presenting evidence for the increased number of good days and reduction in PM10 annual average concentration is mandatory to receive the 15 Finance Commission recommended grants. This requirement neglects the need for essentials such as building a robust monitoring framework. Only 69 out of the 132 NCAP cities have real-time monitoring stations. In 2020-2021, the NCAP was clubbed with other items under control of pollution and the budget was marginally reduced. Many mostly polluted cities are provided with reduced NCAP funds or no funds at all. Thus, the states must be provided freedom in NCAP funds allocation since the top-down approach is not apt to reduce air pollution. Thank you very much. Rodmal Nagarji. मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान मां विजयसन धाम भेसवा माता, साका श्याम जी मंदिर नरसिंहगढ़, मां बुगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, घुरेल पशुपतिनाथ मंदिर ब्यावरा, जालपा मंदिर राजगढ़, बाग बागेश्वर महादेव चांचोड़ा, कोटरा की गुफाएं, 16 खंबे एवं प्राचीन गुफा मंदिर नरसिंहगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये स्थान केवल राजगढ़ क्षेत्र के ही नहीं अपितु देश भर के श्रद्धालुओं की लोक आस्था का केंद्र है। प्रतिवर्ष यहां लाखों की संख्या में देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु अपने मनोकामना पूर्ति हेतु यहां आते हैं। श्रद्धालुओं हेतु आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से मूलभूत एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की महती आवश्यकता है। अतः मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि लोक आस्था के इन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों को और अधिक गतिमान बनाने हेतु प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक समाधान राष्ट्रीय मिशन में शामिल करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। श्री सौगत राय जी। सर एक मिनट जी। सौगत दा। हाँ सर जी जी सर I want to raise the following matter under Rule 377. I would like to draw the attention of the Union Government through this August House
towards the pendency of huge amount on account of job guarantee scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, to the state of West Bengal. The total dues to West Bengal has come to rupees 7,300 crores. These funds have been lying pending despite the submission of proper accounts along with utilization certificates by the state government for the amount received earlier under the MGNREGA Act. Sir, our Chief Minister had sent 2 letters dated May 12 and June 9 to the Honorable Prime Minister on this issue. Sir, a delegation of TMC MPs went and met the Rural Development Minister, Giriraj Singh, to request him to release the funds. Under the Act, payment cannot be denied for more than 15 days to MGNREGA workers, but their wages, the wages of such poor people are being stalled. It is very unfortunate that neither any funds nor any response has been received from the ministry to the state's representations yet. Sir, this is beyond the ethics of the state scheme, and livelihood of the rural people in the state is suffering extremely. Sir, I may mention that not only under this scheme, but also under the House for All scheme, another central scheme, total dues to the state government, sir, total dues to the state government amount to nearly rupees 1 lakh crores. How can the state proceed in this way? This is beyond the ethics of the state scheme and the livelihood of the rural people. Considering the above circumstances, we will fervently request the Government of India to take necessary action to release all pending dues of the MGNREGA and other schemes like House for All to the state government to save the weaker section. I would request the central government not to use it as a political tool to beat the TMC government because the ruling party has been defeated in the assembly elections. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय जी। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1960 में एक आदेश जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अब से महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाएगा, लेकिन इस आदेश को लागू नहीं किया गया। वर्ष 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम वही रहा। चूंकि बॉम्बे नामक शहर अब मौजूद ही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट बॉम्बे के नाम पर ही है, जो उचित नहीं है। महाराष्ट्र शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रियन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है। अंत इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम में भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं के रक्षण के लिए महाराष्ट्र अनुकूलन कानून राज्य और संप्रति विषय आदेश 1960 के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट किया जाना नितांत आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं यह भी दृष्टि है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम महाराष्ट्र हाईकोर्ट किए जाने वाली एक जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में 3/11/2022 में कहा है कि इस मामले में संसदीय प्रक्रिया है, अतः इसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और तथापि यदि ऐसा परिवर्तन किया जाना है तो इसे संसदीय या विधायी निकाय के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अंत भारतीय संविधान भाग 6 राज्य के अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा के स्थान पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के नाम से एक उच्च न्यायालय होगा। अंतस्थापित किए जाने हेतु संशोधन किए जाए और साथ ही अन्य राज्यों के संविधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाए कि वह अपने उच्च न्यायालय को के नाम उन राज्य के नाम के अनुसार बदला जाए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। सभापति जी। श्री राहुल कसवा जी। धन्यवाद महोदय।
मेरे संसदीय क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के नौहर, रावतसर, भादरा तहसील के किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता रहा है। क्षेत्र के किसानों की कंपनी द्वारा खरीफ फसल वर्ष 21, रबी वर्ष 21-22 का बीमा क्लेम आज तक नहीं दिया गया। 35% से अधिक क्रॉप कटिंग की जो कर्मचारी क्रॉप कटिंग हुई है, उसमें बीमा कंपनी कर्मचारी, राजस्व विभाग और कृषि के विभाग के अधिकारियों के उपस्थिति में किसानों के सिग्नेचर्स हुए हैं क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट को लेकर। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने स्टैक के अंदर स्टेट जो लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है, उसमें क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के आंकड़ों को चैलेंज किया गया और बीमा कंपनी बीमा क्लेम को भुगतान करने से मना कर दिया जा रहा है। वह स्टैक के द्वारा सैटेलाइट के डाटाज मांगे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जबकि किसानों के द्वारा लगभग मांग की जा रही है कि खरीफ फसल 21 के अंदर और 22 रबी के अंदर जब किसानों ने सिग्नेचर कर दिए हैं तो उसके उपरांत भी सैटेलाइट के आंकड़े क्यों मांगे जा रहे हैं। आपत्ति की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि क्लेम सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एवरेज के ऊपर दिया जाएगा, जिसका किसान आज भी विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ जिले के नौहर, भादरा, रावतसर में किसानों को खरीफ 21 व रबी 21-22 की क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाए। धन्यवाद सर। श्री राजेश वर्मा जी। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा जनपद काफ़ी बड़ा जनपद है और सीतापुर उसका बहुत बड़ा शहर है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों दैनिक यात्री, मजदूरी करने वाले लोग एवं व्यापारी प्रतिदिन प्रातः सीतापुर से लखनऊ और संध्या में लखनऊ से सीतापुर आते जाते हैं, परंतु प्रातः एवं संध्या में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में सीतापुर लखनऊ यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एक मेमो ट्रेन के अप डाउन के संचालन हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। श्री सुब्रत पाठक जी। श्री सुब्रत पाठक जी। श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से नियम 377 के अधीन अपनी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। आजाद भारत के इतिहास में 2014 से लेकर आज तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय एवं प्राधिकरण ने जो ऐतिहासिक कार्य करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह अत्यंत सराहनीय है। किंतु मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, किंतु सीधा कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। भारतमाला योजना से मैंने सतना से सिमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, प्रयागराज हेतु एक राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग की थी, जिसकी सैद्धांतिक सहमति भी हो चुकी थी। माननीय मंत्री जी का आश्वासन पत्र भी मुझे मिला था, किंतु आज तक दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क जो कि सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्र से गुजरने वाली है, उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त सड़क की स्वीकृति दी जाए। धन्यवाद। श्री खगेन मुर्मू जी। Thank you, Chairman Sir. I would like to draw the kind attention of Honorable Minister of Civil Aviation towards the pressing need of an airport in Malda. The nearest airports to Malda are Siliguri and Kolkata, which are 250 kilometers and 350 kilometers away, respectively far. These long distances have hampered economic activities along with loss of thousands of lives during medical emergencies. Since the 18th century, great quality jute, export grade mangoes, mulberry and excellent quality silk have been the main sources of revenue for Malda. The requirement of an airport would not only facilitate the regional and international trade of these products, but also pave a path to realize the one district, one product initiative and would create an effective value chain to meet the actual demand for these products.
In this regard, I would request the Honourable Minister of Civil Aviation, through you, sir, to expedite the construction of Malda Airport, which has been under construction since 2017. Thank you. श्रीमती संध्या राय जी, श्रीमती संध्या राय जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन मेरे भिंड जिले के लिए मैंने पूर्व में सभापति महोदय आपके माध्यम से पूर्व में सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने हेतु निवेदन किया था, जो आज दिनांक तक विचार में नहीं लाया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि भिंड जिला कृषि उपज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है तथा कृषि विकास की अत्यंत संभावना है। वर्तमान में भिंड जिले में कृषि विज्ञान केंद्र तहसील लाहौर में खोला गया है, जो कि भिंड जिले से उसकी दूरी 60 किलोमीटर है तथा अन्य तहसीलों एवं अन्य 4 विधानसभाओं से भौगोलिक दृष्टि से भी दूर है, जिस कारण से कृषि विभाग से प्राप्त होने वाले लाभ सीमित किसानों को ही प्राप्त हो पाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए खोले गए हैं। यहाँ यह भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि पूर्व में कृषि विज्ञान के नाम से भिंड जिला मुख्यालय पर कृषि विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित कर बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। तत्पश्चात तत्कालीन कारणों से कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर में खोला गया। अतः ऐसी परिस्थिति में भिंड जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो न तो वहां पर भूमि आवंटन की दिक्कत आएगी तथा वहां पर बिल्डिंग भी बनी हुई है, शासन पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। अतः मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करती हूं कि भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र प्रदान करें, जो कि भिंड जिले के किसानों के लिए वरदान साबित होगा तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दोगुना करना, उसमें भी सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद। दिया कुमारी जी। Thank you, Chairperson, sir. Sir, I would like to bring to your notice that in 2015, the Archaeological Survey of India identified sites of religious and historical importance that attract very high tourist footfall under the Adarsh Smarak Yojana to implement disabled-friendly measures. These include solar wheelchairs and battery-driven carts, braille signage, tactile floors or pathways, special toilets and railings, etc., that can facilitate the entry of differently abled people at the archaeological sites. This noble initiative is a part of the Accessible India campaign, Saugamya Bharat Abhiyan, conceptualized by the Honorable Prime Minister to enable persons with disabilities to gain universal access to all archaeological sites. However, such development works in key historical marvels like the Kumbhalgarh Fort and the Ranthambore Fort is yet to take off. In this regard, through you, sir, I'd like to request the ASI to expedite the process of making these destinations more inclusive. Thank you, sir. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह जी। Sir, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched to provide comprehensive insurance coverage against crop loss on account of non-preventable natural risks to help in stabilizing the income of farmers. As Odisha is a natural disaster-prone state, the PMFBY is a major risk mitigation program for the farmers of the state. The premium subsidy sharing pattern is 50-50 between the central and the state governments. The state's share of the premium has been long delayed, while the centre has already released the funds. It is the state government which floats bids for the implementation of the scheme. And it is also the responsibility of the state government to make surveys of crop loss and grant compensation. केले की फसल अधिकतर मात्रा में होती है। इस वर्ष में करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई
क्षेत्र में केले की फसल की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए प्राकृतिक आपत्तियों तथा प्रतिकूल मौसम के केले की फसल पर अनेक रोग का प्रभाव बढ़ता है, जिससे ज्यादातर सीगाटोका CMV जैसे रोग से केले की पूरी फसल खराब हो जाती है और तथा आसपास के केले की फसल भी प्रभावित होती है। इस रोग का फैलाव उस क्षेत्र में तेजी गति से होने की संभावना भी बढ़ती है। पिछले लगातार 2 वर्ष से केले की खेती करने वाले बहुत किसानों का इसमें भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से और कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन रोगों का समावेश हो, जिसके कारण जिन किसानों का नुकसान इन रोगों के रोग होने से उन किसानों का नुकसान हो रहा है, जिसमें से किसानों को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मदद मिल सकती है। धन्यवाद। श्री तेजस्वी सूर्या जी, श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, देश में कोई भी व्यक्ति जब किसी वित्तीय संस्थान में ऋण हेतु आवेदन करता है तो वित्तीय संस्थान द्वारा उस व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है। वर्तमान में भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम कर रही हैं। RBI के नियमानुसार इनमें से सिविल रिकॉर्ड अनिवार्य है, जिसके विवरण के आधार पर ही वित्तीय संस्थान द्वारा आमजन को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न अनाधिकृत क्रेडिट ऐप व प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं, जो ऑनलाइन ही लोन स्वीकृत कर देती हैं। इनमें आमजन के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके भी लोन लेने जैसे साइबर फ्रॉड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कई बार आमजन का लोन आवेदन इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसके रिकॉर्ड में ऐसा विवरण आता है जो कि उनसे संबंधित नहीं होता है। यह विवरण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लापरवाही से दर्ज हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोन देने वाली अनाधिकृत ऐप पर कार्रवाई की जाए ताकि साइबर फ्रॉड बंद हो। साथ ही क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं को भी आमजन से रिकॉर्ड में सही विवरण ही दर्ज करने हेतु बाध्य किया जाए। धन्यवाद। श्री रंजीत सिंह निम्बालकर जी। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपकी ओर से पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में माढ़ा लोकसभा क्षेत्र से मैं चुन के आया हूँ। पुणे जिले के मुला और मुठा जो नदी है, रिवर है, वहां से जो इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर है वो मुला मुठा में छोड़ दिया जाता है और वो छोड़ा हुआ पानी आगे जाके भीमा रिवर में मेरे क्षेत्र में आके मिलता है और भीमा रिवर के ऊपर उजनी डैम बना है। आज उजनी डैम का पानी इतना खराब हो चुका है कि पानी के ऊपर एक बड़ा सा लेयर, ऑयल का लेयर और गंदगी का लेयर पैदा हुआ है और वही पानी आगे जाके कई लाखों किसान पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उजनी से पानी छोड़ा जाता है और वो चंद्रभागा नदी में मिला जाता है। चंद्रभागा नदी जो महाराष्ट्र का भगवान विट्ठल जहाँ की तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ चंद्रभागा नदी होती है। जो आपने लिख करके दिया है उसी को कृपया पढ़िए जी, वही रिकॉर्ड में जाएगा। जी जी। उजनी डैम का पानी आगे जाके चंद्रभागा नदी में मिलकर जाता है, जो पंढरपुर स्थित भगवान विट्ठल जी की माता रुक्मिणी जी के विश्व विख्यात मंदिर से होके गुजरती है। विट्ठल दर्शन के बाद आने वाले भक्त यहाँ चंद्रभागा के नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ये प्रदूषित चंद्रभागा नदी का जल आके मुख में लेते हैं, फिर विट्ठल के दर्शन के लिए जाते हैं। आगे जाके इस नदी हमारे लोकसभा क्षेत्र से माढ़ा से और सोलापुर जिले अन्य विभागों में पीने के लिए और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। महोदय, मैं नमामि चंद्रभागा परियोजना के तहत इस नदी का कायाकल्प करने के हेतु उचित कदम उठाने के लिए मैं आपसे कृपा और विनंती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और भारत सरकार के शेड्यूल 5 में आता है। वर्तमान में उदयपुर संभाग से निर्यात आयात कारोबार की काफी संभावनाएं हैं।
इस संभाग की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुएं कपड़ा, खनिज, पत्थर, संगमरमर के हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण, खिलौने इत्यादि है। वर्तमान में निर्यात योग्य उत्पाद जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद हवाई अड्डे से भिजवाई जा रही है, जिससे संचालन लागत बढ़ती है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि निर्यात आयात व्यापार को आसान बनाने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स खोलने और उदयपुर हवाई अड्डे पर कार्गो सेवा शुरू करने के लिए उदयपुर हवाई अड्डे परिसर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए पर्याप्त जमीन आवंटित करने का श्रम करावे। थैंक यू सर। श्री देवजी भाई पटेल नहीं, श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। Thank you, sir. Sir, Hisar is one of the counter-magnet areas chosen by National Capital Region Planning Board for its regional growth potential. It will also be housing an integrated manufacturing cluster soon. Despite the growing developmental activity, there is no direct railway connection from Hisar to Chandigarh, which happens to be the capital of Haryana and Punjab. This is a matter of concern not only for the people of Hisar, but for people of all of northwest Haryana, parts of Rajasthan and Punjab, for whom Hisar is important for its health facilities, educational institutions and sporting facilities. Currently, the shortest railway route from Hisar to Chandigarh takes almost 6.5 to 7 hours to cover a distance of just about 245 kilometers. This is double the time that it would take if there was a direct railway line which could possibly be laid between Barwala and Narwana or any other feasible route. Therefore, through you, sir, I urge the government to consider this request and ease the access between Hisar and Chandigarh. Thank you. Mohan Unnithan ji. Thank you very much, sir. The Life Insurance Corporation has been functioning for the last The Life Insurance Corporation has been functioning for the last 66 years in country successfully. Today, the LIC has more than 75% of the market share. It provides employment to more than 12.5 lakh people across the country. Unfortunately, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has come up with a draft proposal that it will adversely affect the future of the LIC. The detrimental clause of the proposal aims to hit hard on the commission of the LIC agents by linking it with management expenses and reducing the maximum commission of the agents from 25% to 20%. Sir, it does not stop here. By giving rebates on policy premiums purchased directly from the insurer, it is striking down the role of agents who are key players in this sector. Sir, the LIC is spread over the length and breadth of the country, including the deepest rural pockets where no company and their agents exist. If the IRDA India's proposal comes into implementation, it would gravely harm the whole LIC sector and will demotivate the agents who will eventually be driven out of the sector. This can create a situation, mass employment in the country. Sir, I request the Ministry of Finance to look into the matter and withdraw the unjust proposal of IRDA India. Thank you very much, sir. T.N. Prathapan ji. Thank you, sir. Trichy is known as a cultural capital of Kerala for its rich cultural and engagement with arts and literature. Trichy has also a good legacy of many temple arts. At Trichy, a Central Research Institute for Temple Arts can preserve the legacy of temple arts and it can promote them to international attention. Due to lack of effective attention, many of the temple arts are losing its richness and traditions. The Research Institute can bring them together and it will facilitate a platform for flourishing their traditions. Trichy currently has a good potential for a network of temple pilgrim centers. It has academies of several performing arts. This
atmosphere may strengthen a research academy of temple arts in Trichur. Such an institute can start courses for temple arts, encourage research of them, and facilitate a museum of equipments used for temple arts. Therefore, I request the Honorable Minister of Culture to establish a research institute of temple arts in Trichur. Thank you. Thank you, sir. Dr. Shri Gautam Sigamani Pon. Thank you, sir. So, Ulundurpete Salem National Highway at Kallakurichi Parliamentary Constituency is an accident-prone zone, sir. Accidents take place daily, and in the last 11 years, from 2011 to 22, around 1,036 deaths have been reported, sir. The cause for the accidents is because the four-way national highway track Ulundurpete Salem is incomplete. This project started in July 2008 at an estimate of 941 crores. Is still not completed, but was said to be completed in 2013. Fact is, the work is still incomplete. Athur, Vazhapadi, Udayapatti, Chinnasalem, Kallakurichi, Tyagaduruvam, Elevanasur and Ulundurpete are left as two-way roads, sir, instead of four-way roads. Four-way roads shrink to two-way roads and over bridges having dangerous curves causing tragic accidents. The NH connecting Salem and Chennai via Ulundurpete and Viluppuram is very vital, as it has many education institutions and facilitates large number of small and medium-scale industries in Salem, Namakkal, Kadalur and Viluppuram districts. The speedy completion of the national highway, which is incomplete for more than 10 years, will help in bringing new industries here. Hence, I request the government should speed up the national highway NH 79 road connecting Salem and Ulundurpete, lying unfinished for several years now, and prevent the loss of unfortunate lives in such accidents. Thank you, sir. Shri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Speaker, sir. Chairman, sir. The Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act was enacted in 2003 with the aim to establish financial discipline, improve the administration of public finances, strengthen financial prudence and reduce the revenue deficit, thereby to maintain a sustainable economic growth in the country. During the last 2 decades, it has been subjected to many amendments by the state governments to borrow more funds to meet the expenditure of their states, which resulted into a larger revenue deficit, contrary to the main objective of FRBM Act. Some state governments are resorting to use it as a tool to increase their borrowings by showing fictitious corporations that have no income of their own, where the repayments were being paid by the government. Because of such irresponsible and indisciplined borrowings of few state governments, the main objective of the FRBM Act is being defeated, and revenue deficit of those states is increasing instead of reduction. In view of the above, through this August House, I request the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for Finance to embark on taking immediate corrective steps before it goes out of hands and save the economy of the state, especially from the state where I got elected. Thank you, sir. सभापति महोदय, देश में मछुआरों की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। आज के समय में मछुआरों और मछली पकड़ने के अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण वह अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। मछुआरों की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण बचपन से ही अपने बच्चों को मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगा देते हैं। आज भी देश के मछुआरों के पास पक्के मकान नहीं है, इसकी वजह से उन्हें कोलीवाड़ा में रहना पड़ रहा है तथा यह कोलीवाड़ा समुद्र के किनारे ही बने होते हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण ये लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन में जाते हैं। इनका परिवार बदलतर हालत में जीने को मजबूर है। मछुआरे अपनी नौकाओं को वर्षा के समय बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उचित साधन नहीं होने के कारण उनकी नौकाएं जल्दी खराब हो जाती है। इनके पास कोल्ड स्टोरेज
नहीं होने के कारण इनकी पकड़ी मछली जल्दी खराब हो जाती है। इनकी परेशानी यह खत्म नहीं होती है तथा मछुआरे मछली पकड़ने ज्यादातर खाड़ी इलाके में जाते हैं, जिसमें कीचड़ होने के कारण मछली नहीं पकड़ सकते। इस वजह से उनके व्यवसाय में कमी आ रही है। अतः अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूं कि मछुआरों के भरण पोषण के लिए समय समय पर सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए। केरोसिन, पेट्रोल पर भी सब्सिडी सही वक्त पे देनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उन खाड़ी इलाकों की उचित सफाई की जाए जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, तथा सरकार मछुआरों के व्यवसाय बढ़ाने और इनके बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए कोई उचित योजना बनाए जिससे उनकी परेशानी जल्दी से जल्द खत्म हो सकती है। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र काराकाट के अंतर्गत नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र के अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन जिला मुख्यालय का मुख्य स्टेशन है सर। जबकि अनुग्रह नारायण रोड से मुंशी बिगहा, जीवा बिगहा सीरीज के रास्ते चरण, रेंगनिया, मझौली, सोनौरा, अकोढ़ा जो BRBCL और NTPC का
growing at annual average growth rate of 8.1% between 2015-16 and 2019-20 period, significantly higher than the national AGR of 4.7%. During 2020-21 up to September 2020, Telangana exports were valued at 4.1 billion, registering an increase of 14% in compared to 2019-20. Thank you, sir. But what do you want? You didn't make any request. There is I will increase the export and the valuable foreign currency. Shrimati Supriya Sule. Sir, today road safety seems to be a huge challenge in our country, and this is the issue I want to raise, sir, today. There's an area called Navre Bridge in Pune city, Nare, which is a part of my constituency, sir, in Khadakwasla area. Since 2021 alone, took 17 lives. And बातचीत करते समय कृपया आवाज जरा मंदी रखें. जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, जरा धीमी आवाज में बात करें. या तो न करें, अच्छा होगा कि न करें. बहुत आवश्यक है तो जरा धीमी आवाज में करें. So that, अब वो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं अभी नहीं लूंगा, बाद में. I think please. Okay. Sir, road safety seems to be a big challenge in our country, and I'd like to raise this issue regarding Navle Bridge in my constituency, which is the Nare area in Pune city and Khadakwasla area. Since 2021, took 17 lives and seriously injured 24 people. On November 21st, a series of accidents continued because a truck lost its control and about 40 vehicles caused a large pile of damaged vehicles on that road. The bridge has become a black spot for accidents due to the combination of steep inclines and turns and downward slopes, which have been reduced in the first measure of the check of the accidents. I have time and again raised this issue, and the service roads also need to be spruced up. But the accident somehow had stopped for about 6 months. But in order to ensure that people follow traffic rules and sufficient presence of police along the highway is much needed. Although National Highway, Police and Municipal Corporation of Pune have taken several steps in the past, but we have not been able to get a zero accident area as yet. So I would request the Ministry of Road Transport and Highways to look into the matter and take some very concrete steps, because it's a very large highway and we lose a lot of innocent lives. Thank you, sir. Dr. Shri MP Abdul Samad Samadani. Thank you, sir. Sir, through you, I would like to draw the attention of the government and the Honorable Minister for Civil Aviation especially to a serious crisis that has occurred in the much awaited development process of the Kozhikode International Airport in Kerala. Sir, this crisis has taken place in the completion of the official formalities of the development project of the airport. The crisis, which is related with the financial aspect of the project, can be solved by effective and positive coordination between the central and state government departments and the governments. Sir, I therefore request the Honorable Minister of Civil Aviation to initiate such a move for coordination between the central government and the state government, and to do the needful for starting the delayed development work of the airport at the earliest. Meanwhile, there are reports that the concerned authorities may be deciding to reduce the length of the airport runway, considering the non-completion of the essential official formalities by the concerned. Therefore, sir, I request the government to cancel that idea, which was already given up by the Honorable Minister on the request of members of Parliament representing the area. The curtailment of the runway will be very harmfully affecting the well-being, welfare, the day-to-day functioning and future development of this airport, this international airport, on which a large number of passengers, including the Pravasis, depend. Sir, this very important development work of the airport has to continue, and the curtailment of the runway, the idea has to be withdrawn, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Shri Subrat Pathak ji. धन्यवाद
अध्यक्ष जी, मैं बहुत एक गंभीर समस्या के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार को ध्यान में कि देश में ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में 10 वर्ष से कम उम्र के हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस दिशा में कारगर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अब तक ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी की CGHS की सूचीबद्ध बीमारियों के पैनल में शामिल नहीं किया गया है, जिससे सरकारी क्षेत्र के कर्मियों को अपने ऊपर ही निर्भर रहकर इलाज कराना पड़ता है और लोगों को इलाज कराने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई तो ऐसे लोग हैं कि जिनके पास में इलाज के लिए कभी-कभी उनको अपना खेत तक गिरवी रखना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। ऐसी तमाम सारी समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। इसलिए इस इलाज में मरीजों की थेरेपी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे संबंधित थेरेपी को भी CGHS के अंतर्गत लाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश के कुछ संस्थानों में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों का स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से आधुनिकतम तरीके से इलाज हो रहा है, लेकिन इस इलाज में भी अधिक खर्च होता है, जिसे वहन करना सभी माता पिता अभिभावक के लिए आसान नहीं होता है। हमारे क्षेत्र में मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं कि जो इसको लेकर उनको या तो प्रॉपर जानकारी नहीं सही से मिल पाती है और उसके बाद में वो जाते भी हैं तो कई बार भटकते रहते हैं, और चूंकि ये इलाज सभी जगह उपलब्ध नहीं है तो इसलिए भी बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए खर्चे का भी उनको अधिक खर्चा करना पड़ता है। इसलिए इस बीमारी को अविलंब CGHS की सूचीबद्ध बीमारियों के पैनल में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लाभार्थियों को ऑटिज्म पीड़ित अपने बच्चों को इलाज कराने की अनुमति मिल सके। कई जगह से मेरी सूचना में भी ये आया है कि कई जगह से इनको लौटा दिया गया है, तो इनको लौटाया ना जाए और सभी जगह के ऊपर इसकी व्यवस्था हो। इसके अलावा आपके माध्यम से मेरा यह भी अनुरोध है कि ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी को CGHS के साथ साथ अनिवार्य रूप से निजी चिकित्सा बीमा योजना में भी शामिल किया जाए, जिससे देश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, यही आग्रह करूंगा। धन्यवाद। हमारे श्री तेजस्वी सूर्या जी नहीं है, देवजी भाई नहीं है। अभी माननीय विदेश मंत्री जी का राज्यसभा में वक्तव्य चल रहा है, कुछ समय उनको लग सकता है, तब तक हमारे कुछ माननीय सदस्य शून्य प्रहर में रहने बोलने से वंचित रह गए थे, उनको कुछ अवसर देते हैं। श्री NK प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Chairman. Sir, I would like to raise a very serious matter of urgent concern in which the involvement of the Ministry of Labour is required, that is regarding the Employees Pension Scheme 1995. Honourable Chairman, it may kindly see, on 4th November 2022, the Honourable Supreme Court has delivered a judgment in respect of Employees Pension Scheme 1995 regarding the higher pension on the basis of actual salary. The matter was heard by various High Courts of India, Kerala High Court, Rajasthan High Court, Delhi High Court, and delivered their judgments. Against the judgments of these various High Courts, Government of India, Labour Ministry, and Employees Provident Fund Organization has preferred a special leave appeal, and that appeal has been rejected and dismissed by the learned Supreme Court, and subsequently review petition was filed, and the review petition was further allowed, and they delivered a detailed judgment. Sir, the judgment is affecting millions of workers in the country, those who are in the service and also those who are out of service who have already opted pension. In such a situation, it is having series of ramifications are there as far as the judgment is concerned. So my point is, as per the judgment of 2022, that is Employees Pension Scheme, those who have not opted for higher pension
On the basis of the actual salary, they are entitled to opt for the pension within 4 months from the date of the judgment. So the date of judgment was on 4/11/2022. But it is quite unfortunate to note that the Employees Provident Fund organization has not yet taken any step so as to implement the order of the Supreme Court judgment. That will be adversely affecting the poor workers. And another point is those who have already retired prior to 1/9/2014, they are not entitled to for opting higher pension, but at the same time, sir, 1 second, but at the same time, the R.C. Gupta judgment is approved and ratified in the judgment, so there is an ambiguity as far as the employees' pension scheme is concerned. So my point is, the government of India should come out with a clear statement as far as the implementation of the Supreme Court judgment regarding implementation of the order, as well as those who already retired before 1/9/2014. Then I would urge upon the Labour Ministry to come out with a statement for the implementation of the judgment at the earliest, so as to protect the interests of the millions of workers. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां 3 ऐसी घटनाएं हो गई सर सभापति महोदय, जो देश को जानने लायक है कि पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है, शेड्यूल 5 का जिला है, जो संथाल पड़ना पूरा इलाका है, उसमें 3 अभी हत्याकांड ऐसा हुआ जिसमें कि घर में घुस के लड़की को जला दिया गया। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो दुमका में हो, चाहे काठीकुंड में हो, चाहे मेरे लोकसभा जरमुंडी में हो सर, और पिरपैंती में भी अभी हुआ है सर, जो मेरा अपना खुद का विधानसभा है जहां का मैं वोटर हूं। ये चारों जगह जो चीजें दिखाई दे रही हैं, और लगातार मैं इस पार्लियामेंट में बोलता रहा हूं सर कि वोट बैंक का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो आपका जिला मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, इन सबों का डेमोग्राफी बदल गया। और डेमोग्राफी यदि पूरे देश के पॉपुलेशन के बढ़ोतरी को यदि आप लेंगे, और यदि मेरे इलाके और जो बिहार का पार्ट है, जो बंगाल का पार्ट है, जो संथालपन्ना झारखंड का पार्ट है, उसमें अचानक पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है। और पॉपुलेशन बढ़ा है मुसलमानों का, उन मुसलमानों का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर्म के आधार पर यदि आप देखते हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपकी बहू सुरक्षित है कि नहीं, बेटी सुरक्षित है कि नहीं। ये 4 घटनाएं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कि हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, लेकिन जो एक बड़ा ट्रेंड डेवलप हुआ है और पूरे देश को जानने वाला सवाल है सर, कि आदिवासी लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर रहा है, और शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त पाकुड़ एक जिला है हमारे यहां जिसका पॉपुलेशन 30% 32% मुस्लिम पॉपुलेशन था, आज वो 66% पर हो गया है। मैं जब गोड्डा में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त जो है केवल और केवल 2 लाख मुसलमान थे, आज 4 लाख मुसलमान हैं। क्या ये यहां के मुसलमानों का रोजगार नहीं छीन रहे? क्या एएसआई और पीएफआई की जो एक्टिविटी है इस देश को तोड़ नहीं रही है? पूरे दुनिया का जो भी साइबर क्राइम हो रहा है वो सब मेरे इलाके में हो रहा है। यदि आप देखेंगे जामताड़ा नाम का नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा सीरियल हो चुका है, और वो सब बांग्लादेशी मुसलमान और घुसपैठिए कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये समय आ गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाइए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको बाहर करिए, और जो आदिवासियों के नाम पर जो प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, जो शादी करके धर्मांतरण कर रहे हैं और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, उसको आप रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि
फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बिहार में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। बिहार में जो भी स्कूल हैं उसमें बिल्कुल साफ नियम है कि जो सरकारी स्कूल हैं वह रविवार को बंद होंगे और जो उर्दू स्कूल है वह शुक्रवार को बंद होंगे। और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन पूरे सीमांचल क्षेत्र में चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सभी जगहों पर शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। जो भारत सरकार अपना मध्याह्न भोजन शुक्रवार को देती है वो बढ़ता नहीं है, वह पूरा का पूरा पैसे का घोटाला हो रहा है। और संविधान से ऊपर व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब मेरे क्षेत्र में मझरिया में एक उर्दू स्कूल है, एक भी अल्पसंख्यक बच्चा वहां नहीं पढ़ता है, फिर भी जबरदस्ती शुक्रवार को वहां छुट्टी कराई जाती है, यह कहते हुए कि यह उर्दू स्कूल है, जबकि वहां एक भी अल्पसंख्यक बच्चा नहीं है। वहीं सीमांचल के क्षेत्र में एक पूरी साजिश के तहत जो एक पूरे इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी कराई जा रही है, उस दिन का मध्याह्न भोजन का घोटाला हो रहा है और बिहार सरकार पूरी तरह से चुप है। अभी पीरपैंती में भी श्रीमती नीलम देवी जी की जघन्य हत्या हुई है और वहां का पुलिस अधीक्षक कहता है कि नहीं, यह मामला उधार लेने का है और उधर कोई अल्पसंख्यक पूरे समाज को वह अपमानित कर रहे हैं। अगर एक महिला की इस बुरी तरह हत्या की जाती है और आप इसको समाज उधार से जोड़ रहे हैं तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी। Thank you very much. Sir, I wish to draw the kind attention of this House and the government towards an injustice done against lakhs and lakhs of students who are depending pre-matric scholarship. So this pre-matric scholarship was now abandoned. It is cancelled. Government of India has not said any specific reason, sir. Sir, you may be knowing that poor students, this is scholarship, you have to realize. This was under Ministry of Social Justice and Ministry of Tribal Affairs. So you can very well imagine, sir, how important was this. Lakhs of students, they were depending upon this scholarship only, sir. Not only that, the cruelty in that is something more. Because everything was going on nicely. Application was invited, it was scrutinized, and they were waiting for the final order. Unfortunately, in a fine morning, Government of India decided to withdraw that. 1 to 8 class. 1 to 8 class, poor students. These poor students, they were depending this because, sir, this was a very, very important motivation for the students, relief for the students. Such poor students were enjoying that, sir. We have to realize one thing more, sir. Government, I would like to ask the Honorable Minister, what is that you are going to gain out of this? What benefit is you are going to have it, except doing some hardship to the poor students? Sir, I humbly submit, it's a humanitarian kind of question. I humbly request the government not to proceed this kind of these things. Kindly restore that and clear the backlog. These are my humble submissions, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. सभा, देश के लिए बहुत अच्छा दिन है। पिछड़ों में से जो उपराष्ट्रपति बने, आज उन्होंने राज्यसभा में नेतृत्व किया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और पिछले दिनों देश के लिए सौभाग्य की बात है कि एसटी क्लास से राष्ट्रपति बनाए गए। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर से संबंधित
पिछड़ों में से, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं, और दलित जो 22% के करीब हैं। तो जम्मू कश्मीर में आजादी से अभी तक उनका शोषण होता रहा, पिछड़ों का भी और दलितों का भी। और 370 हटने के बाद जो खास करके वहां एसटी क्लास में आते हैं, गुजर मुसलमान या गुजर बकरवाल, उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छा सोचा और 10% का उनके लिए रिजर्वेशन दिया, जो पहली सरकारों ने कभी रिजर्वेशन नहीं दिया। उनका शोषण हुआ, वोट ली, रिश्तेदारियां करी, पर करा कुछ नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उनको गुमराह करने के लिए एक चाल चली है कि तुम्हारा जो आरक्षण हो 10% हुआ है, उसमें 10% जो आरक्षण हुआ है उसमें दूसरी जातियों को लेके आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार सहानुभूति पूर्वक उनके बारे में सोचे और जो 10% आरक्षण उनका है वो कम ना करा जाए। अगर कुछ जातियां ली जाए तो प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस अलग से उनका आरक्षण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। चलिए आप स्लिप भेजिए जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई बार मैंने इसको सदन में रखने का काम किया। मेरा लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण जो धलभुंगड़ एयरपोर्ट है वो उड़ान स्कीम में है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका काम शुरू किया जाए। पिछले सरकार जब हमारे थे उस समय हमारे माननीय एविएशन मिनिस्टर स्टेट जयंत सिन्हा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। 2019 में जनवरी महीना में उसका भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन आज तक इसका शुरुआत नहीं हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अनदेखी का चलते आज तक शुरू नहीं हुआ। क्योंकि जमशेदपुर एयरपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ टाटा जैसे घराना 8-10 बड़े उद्योग है। वहीं आदित्यपुर इंडस्ट्री बेल्ट में लगभग हजारों उद्योग है जो कि विभिन्न क्षेत्र में लोग अपना बिजनेस का पर्पस में जाते हैं। वही यूरेनियम जैसा, कॉपर जैसा माइंस भी है, आयरन और का है। तो मेरा आपके माध्यम से ही कहना है कि सिर्फ ये झारखंड के सीमावर्ती इलाका नहीं बल्कि उड़ीसा के बालेश्वर वो औद्योगिक क्षेत्र है, आदित्यपुर उद्योग क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर वो भी औद्योगिक क्षेत्र है और मात्र 72 किलोमीटर 59 किलोमीटर 46 किलोमीटर में। मैं आपको आपके माध्यम से माननीय एविएशन मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से अविलंब बात करके उनका मनसा साफ करते हुए, क्योंकि झारखंड में जो अति आवश्यक है उसको नजरअंदाज करके अभी देवघर में हमारे निशिकांत दुबे जी अभी नया नया एयरपोर्ट खोले, वो अभी दुमका का बात कर रहे हैं। तो दुमका महज 32 किलोमीटर है और जमशेदपुर अति महत्वपूर्ण है, उसका तरफ नहीं जाते। लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रालय और माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, टाटा जैसा जमशेदपुर सारे उद्योग घराना है, इंडस्ट्री बेल्ट के साथ साथ तो माइंस इलाका है, उसका जल्द से जल्द। और चाकुलिया में भी एयरपोर्ट है, वहाँ पूरी उद्योग नगरी है। इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि धलभुंगड़ का एयरपोर्ट जो हमारे उड़ान स्कीम में है उसका जल्द से जल्द शुरू किया जाए। धन्यवाद। श्री रवनीत सिंह जी। चेयरमैन साहब थैंक यू। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पंजाब में हमारे बहुत ही मशहूर नामवर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, बहुत बुरी तरह उन्हें एक बहुत बड़ी गैंग वॉर में पंजाब में मार दिया गया और कुछ ही दिन पहले राजस्थान में बहुत बड़ा शूट आउट हुआ है। सर, एक पंजाब गैंगलैंड बन के रह गया है। वहां पे सरकार रोज आना, वहां पे कत्ल हो रहे हैं और दोबारा पुराना माहौल जैसे था पंजाब में टेररिज्म वाला माहौल लाया जा रहा है। सर, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर भी उसमें मिनिस्ट्री लगी हुई है और जो उसके मारने वाले हैं वो कनाडा अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। सर, उसके ऊपर लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है, क्योंकि पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है लेकिन सरकार वहां की बिल्कुल फेल हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में ये लेके, क्योंकि वो बहुत बाहर के देश वहां से वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके मां बाप रोज तड़फ रहे हैं। सर, इतने बड़े नामवर सिंगर और अनेकों उसकी तरह जो नौजवान मारे जा रहे हैं, उनको न्याय मिले, उनके मां बाप कहीं ये तो सोच सकें भी हमारा बेटा चला गया और उसका हमें जिसने मारा उनको सजा तो मिली,
तो इसलिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं, ये पंजाब में कत्लेआम बंद हो और दोबारा जो टेररिज्म वाले हालात बने हैं वो उनको ढूंढ के यहाँ पे सजा दिलवाई जाए, जिससे सिद्धू मूसेवाले जैसे परिवारों को आराम आ सके। फसल बीमा योजना, ये जो केंद्र सरकार किसानों के लिए जो योजना लाई है सर, इसमें आपने अगर किसानों से डायरेक्टली हम जब बात करते हैं तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स ही उसमें आती हैं। एक तो 72 आवर्स में जाके आपके नुकसान जहां पर हुआ उसकी फोटो क्लिक करके आप पहले कंपनियों को भेजिए, जहां इंटरनेट चलता है, हमको कनेक्शन मिलता है, वहां से तो फोटो भेज दिए जाते हैं। पर आप एक जगह बोलते हैं घरकुल इसलिए कैंसिल किया जाता है क्योंकि इनके पास एंड्रॉइड फोन है, और किसान अगर एंड्रॉइड फोन स्मार्ट फोन चलाता है और उसके बाद भी अगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो 72 घंटे में जाकर वो अपनी फसल की फोटो नहीं भेज पाता है, कंपनियों को नहीं पहुंच पाता है। फसल बीमा में सर 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों का मुद्दा है और जहां हमारी सरकार उन्हें बहुत मदद करना चाहती है, इसलिए ये योजना का लाभ डायरेक्टली उनको पहुंचना चाहिए, पर उसमें इतनी त्रुटियां हैं कि उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली वो बेनिफिट कंपनियों को हो रहा है, किसानों को नहीं हो रहा है सर। किसान अगर 50,000 भरते हैं, लाख रुपया भरते हैं, 1.5 लाख रुपया भरते हैं, उसके रिटर्न में 0 पैसे उन्हें मिले जा रहे हैं। तो इसके लिए इस पे डिस्कशन करके इसकी त्रुटियां निकालना बहुत जरूरी है। हमारे कृषि मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं विनंती करूंगी सर, जहां पर हम सभी को फायदा पहुंचाने की बात करें, किसानों को इसमें लाभ नहीं हो रहा है, सीधा उनका नुकसान हो रहा है। पैसे देने के बाद कंपनियों को डबल मुनाफा होता है और हम हमारे किसानों को 0 से हम रह जाते हैं। तो आपसे विनंती करूंगी किसानों को इसके ऊपर कुछ ना। बहुत शुक्रिया जनाब, एक बड़ा ही अर्जेंट मसला उठाने के लिए। जनाब आजकल कश्मीर में सब 0 टेम्परेचर है, 0 से नीचे पारा गया है, तो आज ही वहाँ पर जो फराहमी है बिजली की वो सबसे कम है और ये अनप्रेसिडेंटेड है इस साल। और अनरेगुलेटेड जो पावर कट्स हैं, जो शटडाउन से स्ट्रीमलाइन करिए, ये तवक्को की जाती थी कि पावर स्ट्रीम किया जाए और उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा बेहतर बनाई जाए। उसके मुकाबले में जनाब इस साल तो हालत और भी अबतर हो गई है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि कोई 2500 मेगावाट के करीब वहाँ बिजली की ज़रूरत है रोज़ाना, उसके मुकाबले में सिर्फ 1600 के करीब वहाँ सप्लाई की जाती है। एक तो वहाँ लोकली स्ट्रीमलाइन किया जाए, रेगुलेट किए जाए जो भी पावर कट्स हैं शटडाउन से, और दूसरी यहाँ से बिजली की जो फराहमी है वो इंक्रीज़ की जाए ताकि ऑप्टिमम लेवल तक 2500 मेगावाट तक जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उस तक वहाँ बिजली फराहम की जाए और लोगों को सब 0 टेम्परेचर में, जबकि इस वक्त फ्रीजिंग से नीचे चला गया टेम्परेचर, तो उसमें उनको असुविधा न हो। श्रीमती जसकौर मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं एक ऐसे अति महत्वपूर्ण और वर्तमान में चल रहे एक बहुत किसानों के प्रति अन्याय को दिखाना चाहती हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिलों में जहां 23 लाख पौधे अमरूद का फल देते हैं, यहां 3000 गाड़ियां उनकी यहां दिल्ली में आती हैं, नेशनल हाईवे बंद कर दिए, स्टेट हाईवे बंद कर दिए। ऐसी परिस्थिति में किसान अपने फलों को रास्ते में ही पटक रहे हैं और किसान बर्बादी के कगार पर हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि नेशनल हाईवे और हाईवे बंद नहीं होने चाहिए और ना ही राजस्थान की सरकार ने कोई प्रोसेसिंग यूनिट वहां स्थापित की ताकि वो अपने पके हुए फल को वहां दे सके। मैं आपके माध्यम से ये कहूं कि भारत जोड़ो यात्रा, ये जोड़ो यात्रा नहीं, किसानों के लिए, भारत किसानों को तोड़ने की यात्रा जो चालू हो रही है, इसमें राजस्थान की सरकार का पूरा हाथ है और वहाँ रंगारंग कार्यक्रम करते हैं और उधर किसान बर्बाद हो रहे हैं। Thank you, Honourable Chairman. My submissions regarding the Sabri project. Sangamali-Erimeli railway line will provide connectivity to the National Pilgrim Center, Sabrimala, with many other pilgrim centers, including Kaladi, the birthplace of Sankaracharya, Baranangaram, the Shrine Church of St. Alphonsa, Erimeli, the center of religious fraternity. The railway line will connect 14 commercial and industrial centers of Kerala. It will have a great impact on the pilgrim tourism potential of the state, overall development of the Ernakulam, Idukki, Kottayam and Pathanamthitta district. Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi has directed to include this railway line project into the Pragati platform on 26th October. However, due to various reasons, the project did not progress and led to the freezing of the project by the railway on September. Sir, Government of Kerala has informed Railway Board
the willingness to share 50% of the cost of Angamali-Erimeli Sabari new project. Considering the importance of the project, the overall development of the state, boost the pilgrim tourism, commerce, industries, urbanization, public transport, etc., and the fact that government of Kerala has agreed to bear 50% of the cost of the project. I urge on the government to include Angamali-Erimeli Sabari railway line to the Prime Minister's Gadi Shakti project and approving the revised estimate with a facility of Vande Bharat rail service. Thank you. Shri Vinayak Rao ji. धन्यवाद सभापति महोदय। खास करके महाराष्ट्र के किसानों की समस्या मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस वक्त महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की वजह से जो फसल आ रही थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी, चाहे वो धान हो, कपास हो, सोयाबीन हो, और बरसात के वजह से, भारी वर्षा के वजह से फसल किसानों को मिलने के जब वक्त था तभी न मिलने के बाद आज किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई कि हम भविष्य में कैसे जी सके, और ना सरकार मदद करते, किसानों की मांग है एसडीआरएफ में बढ़ोतरी होनी चाहिए, एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, किसानों को मदद मिलना चाहिए, फसल बीमा स्कीम की भी मदद सही वक्त पे मिलनी चाहिए, बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। विनायक राव, आप बोल चुके हैं 0 आवर में आज? नहीं, वो रिकॉर्ड में नहीं आया था। नहीं, बोल चुके हैं दोबारा नहीं। तो खत्म करता हूँ सर। तो नहीं, खत्म करने के लिए बोला। कांट भी अलाउ। आप जी बोल चुके हैं एक बार, तो प्लीज आपको भी ध्यान रखना था। कोई बात, हाँ प्लीज। நன்றி அவைத் தலைவர் அவர்களே. No, it can't be like that. Please. நன்றி அவைத் தலைவர் அவர்களே. நாடு முழுவதும் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய வேண்டும். ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் பலரும் தற்கொலை செய்து வந்து இருக்கக்கூடிய நிலையிலே ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழகத்திலே ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்வதற்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் சட்டமன்றத்திலே சட்டம் இயற்றி தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருடைய ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி ஆளுநர் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இன்னும் அந்த தற்கொலை உயிரிழப்பு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளெல்லாம் இணைந்து பெரும்பான்மையாக ஒருமனதாக இயற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் அங்கே உயிரிழப்பு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. எந்த விதத்திலும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஆளுநர் இந்த மசோதாவை இழுத்தடித்து கொண்டிருக்கின்றார். கிட்டத்தட்ட இந்த ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா உள்ளிட்ட 22 மசோதாக்களுக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய மசோதாவை ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காது தமிழக சட்டப்பேரவை மட்டுமல்ல 8 கோடி தமிழர்களையும் அவமதிக்கக்கூடிய செயல். ஆளுநரை ஒன்றிய அரசினுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநரை அரசு. माननीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी. I rise to appraise this August House of the key foreign engagements and initiatives taken by India since monsoon session, and which ended on 8th of August 2022. During this period, India's diplomacy continued apace. Honorable President, Honorable Vice President, and Honorable Prime Minister interacted with a number of their foreign counterparts in India and abroad. We also participated in events linked to G20, SCO, and ASEAN, while hosting a number of foreign dignitaries in India. This included Secretary General Antonio Guterres of the United Nations. I myself visited a number of nations, as did several our External Affairs Minister and other Ministers of State. And we have received many of our counterpart colleagues here in India. Together, these activities reflected India's growing interest, expanding footprint, and more intensive partnerships. Through these efforts at multiple levels, we were able to advance our national objectives in a world that is increasingly beset with uncertainties, disruptions, and rivalries. Honorable President met Her Majesty Queen Maxima of Netherlands, who visited India from 29 to 31st August 2022 in her capacity as United Nations Secretary General's Special Advocate. Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, also called on Honorable President during her state
visit to India, Honorable President's first overseas visit was to United Kingdom to attend the funeral of late Queen Elizabeth II. Honorable Vice President represented India at the India-ASEAN Commemorative Summit at Cambodia, which elevated the India-ASEAN relationship to a comprehensive strategic partnership. He also attended 17th East Asia Summit, which is an important forum to promote free, open, inclusive, and rules-based Indo-Pacific. Apart from bilateral engagements in Phnom Penh, he visited UNESCO World Heritage Temples at Thap from Angkor Wat, where conservation and restoration work has taken place with India's support. Furthermore, on the invitation of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of Qatar, Honorable Vice President attended the opening ceremony of FIFA World Cup 2022. This reflected India's long-standing friendship and relationship with Qatar, which is home to over 8.5 lakh Indian nationals. Honorable Prime Minister participated at Samarkand Summit of Shanghai Cooperation Organization Council of Head of States, where India assumed the chairmanship of SCO. As chair of SCO, India's priorities are to advance the theme of secure, articulated by Prime Minister initially at the SCO Summit in Guangdong in 2018. Secure stands for security, economic cooperation, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity and environment. At Samarkand, Prime Minister voiced global sentiment when he declared that this was not an era of war. His statement was in the context of the Ukraine conflict, where our advocacy of dialogue and diplomacy has been consistent and persistent. It has a larger resonance as well. We have also extended support on specific concerns such as supply of food grains and fertilizers. As indeed on security of nuclear installations, our position has been broadly appreciated by the international community and finds reflection in G20 Bali Declaration. I'm very happy to inform the House that Kashi has been designated as the first SCO cultural and tourist capital for 22-23. This would facilitate showcasing of our age-old knowledge, inheritance, and our rich social and cultural heritage. The Prime Minister also attended the state funeral of late Prime Minister Shinzo Abe of Japan, who was a particular friend of India. In his meeting with his counterpart, PM Fumio Kishida, Prime Minister noted that invaluable contributions made by Shinzo Abe to strengthening India-Japan relations, as well as conceptualizing the vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. Both PMs renewed their commitment towards enhancing India-Japan strategic and global partnership and to work towards promoting regional and international cooperation. The Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres, paid an official visit to India from 18th to 20th October and joined Prime Minister in Kevadia to jointly launch the Lifestyle for Environment initiative. Heads of state and governments from France, UK, Estonia, Georgia, Maldives, Nepal, Madagascar, Mauritius, Argentina, and Guyana contributed with their messages of support for the LIFE initiative. Allow me to turn now to the subject of G20. As the House is aware, the Prime Minister attended the Bali G20 summit recently, and we therefore thereafter assumed its presidency. G20 is the premier forum for global economic cooperation, representing around 85% of the global GDP, over 75% of the world trade, and about 2/3 of the world population. Prime Minister had noted that India's presidency of the G20 during the year of Azadi Ka Amrit Mahotsav is a matter of pride for every Indian. The G20 meetings have already commenced in India, and our endeavor is to organize about 200 of these meetings in 32 different sectors in multiple locations across India. The G20 summit to be held next year would be one of the highest profile international gatherings to be hosted by India.
During the G20 Bali summit held under Indonesia's presidency, India extended fullest support to ensure its success. Our contribution to finding a common ground among members in a polarized environment was widely appreciated. Prime Minister also held discussions with counterpart leaders on key issues of global concern. They focused mainly on reviving global growth, ensuring food and energy security, promoting technology, preserving environment, and addressing public health and digital transformation. As is customary, many of these opportunities also provided an occasion to take stock of our bilateral relationships. Since we were assuming the responsibility, this was also the time to seek the support and cooperation of all G20 members for the success of India's presidency. Honourable members are aware that the G20 is taking place in the largest context of geological crisis, food and energy insecurity, slow progress of sustainable development goals, mounting debt burden, and challenges to climate action and climate justice. Our endeavour is to build consensus within the G20, champion causes, especially of the Global South, and shape the setting up of the agenda. This will also be an occasion for us to highlight the 3 Ds of India: development, democracy, and diversity. In our global engagements, we have discerned strong interest in India's digital delivery, public health response, green growth and development, as well as the empowerment of all sections of society. There is also an enhanced interest in our democratic traditions, which go way back in our pluralistic and consultative culture. We envisage the G20 presidency as an occasion to showcase India to the world. This will be done through cultural activities, regional festivals, technology programs, sustainability initiatives, millets promotion, one district, one product, community engagement, and civil society activities. Our presidency will witness a Jan Bhagidari, where all of India would not only participate but celebrate this occasion. As the House is aware, government has briefed leaders of political parties in this regard. We see this as a truly national endeavour and seek the cooperation of everybody to make it a success. I would also like to highlight that India will provide stronger voice to the issues of interest to the Global South. This is very much part of our DNA. It was in evidence most recently during the vaccine Maitri. Our emphasis will be on sharing the India story, caring of all, and taking collective action. It will focus on emphasizing our achievements and priorities such as digital India, clean energy, sustainable lifestyles, women-led development, and multilateral reforms. Prime Minister's initiative on lifestyle for environment movement, and India's millet initiative, which has resulted in UN declaration of the year 2023 as the International Year of Millets, would also be prominent in India's approach towards addressing these sustainable development goals. Today, we are building stronger bridges with both developing countries and advanced economies. Apart from our G20 presidency, we are members of a growing number of groups and mechanisms. Some of them are relatively established, like the BRICS and Commonwealth. Others have been more recent, like the Quad and SCO. And still others are emerging, like the 12 IUT and Indo-Pacific Economic Framework. We are also increasingly engaging the world in group formats, reflecting the growing interest on their part in cooperating with India. This could be with the ASEAN, Africa or Pacific Islands, or indeed the Nordic nations, CARICOM, CELAC or Central Asia. Our growing collaboration with the European Union is of particular importance. I would also like to share with the House that the ministers of MEA have been equally active during this period. EM has hosted foreign ministers of Maldives, France, Singapore, Botswana, United Kingdom, Ghana, Gabon, Belarus, Syria, UAE and Germany in this period. I would also like to highlight the India-Singapore Ministerial Roundtable and the collective interaction with 12 African
African ministers dealing with education and skills that took place in New Delhi. It would give the honourable members a sense of the breadth of our engagement and the growing global interest in India. This was also in evidence during the outgoing visits of the EM to Thailand, Brazil, Paraguay, Argentina, UAE, Japan, and Saudi Arabia, Uzbekistan, USA, Australia, New Zealand, Egypt, and Russia. It was our privilege to represent India at the UN General Assembly high-level segment this year. It took the occasion to engage with G4, the L69 Quad, IBSA, BRICS, SELEC, and CARICOM, and hold multiple trilaterals and bilaterals. Our ministers of states have been equally vigorous in promoting the interest of India abroad. Sri Muralidharan went to Brazil, Senegal, USA, Oman, Djibouti, Kenya, Eritrea, and Nigeria. I represented India at SICA Summit at Kazakhstan and visited Georgia, Norway, Iceland, and Malta. Dr. Rajkumar Ranjan Singh was our representative at IRA Ministerial and visited Indonesia. The House should also be aware that as chair of the Counter-Terrorism CTC of UNSC, India hosted its special meeting in October. All the 15 members participated and paid homage to victims of 26/11 Mumbai terrorist attack at Memorial Wall in Taj Mahal Palace Hotel. This was the first time that the UNSC held a meeting in India. Their Delhi Declaration emphasized the need to display zero tolerance towards terrorism and combat it in all its forms and manifestations. I'm happy to inform the House that after a gap created by COVID, India will be hosting 17th Pravasi Bharatiya Divas at Indore from 8th to 10th January 2023. This year's theme acknowledges the contributions of Indian diaspora as Diaspora, reliable partners for India's progress in Amrit Kal. The 32 million Indian diaspora is a great source of support for our country. India's 4C commitment of care, connect, celebrate, and contribute would be on display during the celebrations. His Excellency President Mohammad Irfan Ali Goyana of Guyana will be the chief guest at Pravasi Bharatiya Divas 2023. Where Republic Day 2023 is concerned, we have invited His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt as the chief guest. He has graciously accepted the invitation. Honourable members would also be glad to know that 12th World Hindi Conference will be held jointly between India and Fiji from 15th to 17th February 2023 at Fiji. This will be the first occasion of hosting this event in Pacific region. Foreign policy today is no longer just an excuse of a ministry or just an exercise of a ministry or even that of the government. It has a direct impact on the daily lives of all Indians. This may be in ensuring that our products have market access or that our talent gets into the global workplace, but it is equally an effort to ensure that technology, best practices, and capital flow into India. Our endeavour in a difficult global situation is that the welfare of Indian people is ensured. However, challenging the circumstances may be. This may be in exceptional situations like Operation Ganga in Ukraine, or the ability to access key necessities like energy and fertilizers on affordable terms, or indeed in concluding migration and mobility partnerships as we have just done with Germany. Indian foreign policy is there to serve the Indian people. We will do whatever it takes to discharge that responsibility. It could be in ensuring international support for our policies or in acceptance of our interests and objectives. These may be difficult times, but it is also an occasion to display our leadership and make a strong contribution to global peace, stability, growth and security. Honourable members know this well and understandably approach the ministry with their particular concerns and issues. It has been our earnest effort to respond as effectively and sincerely to their communications. We are extremely conscious that foreign policy must respond to the requirements and demands of our society. We demonstrate that as much through the activities of our embassies abroad as we do at home, through improved passport and immigration services. Every
very confident that this august House does appreciate both our promotion of national interest abroad as well as our responsiveness to the daily requirements of our people. I conclude with the expectation that the House will continue to extend its fullest support to our efforts and encourage our success in G20 presidency. Thank you, Chairman, sir. No. Item number 15, समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019, माननीय मंत्री जी. No queries. You know, please sit down. No. Honorable, chaliye. Item number 15 now. Item number 15. Please. No. Nothing. Please. Chaliye. Honorable. Please sit down. Please. Honorable Speaker, sir. नोटिस दीजिए उसका. ऑनरेबल मिनिस्टर के वक्तव्य पर कोई कमेंट नहीं होता. प्लीज अधीर साहब बैठ जाइए. बैठिए, प्रेमचंद साहब बैठिए. आप नोटिस दीजिए, चर्चा हो उसके ऊपर. प्लीज. नो. बैठिए, अधीर साहब बैठिए. बैठ जाइए. Please, Mr. Honorable Speaker, sir, I am rising to move in this August House official amendments to the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. The bill was introduced in the Loksabha on 9 December 2019, and Honorable Speaker, sir, had referred it to the Standing Committee on External Affairs 2019-2020 for examination and report. I thank the committee for examining the bill in detail and making very useful recommendations and observations. To suitably incorporate these recommendations, the Ministry of External Affairs held several rounds of ministerial consultations with concerned ministries and departments. The amendments have been drafted and finalized in consultation with and concurrence of the Ministry of Law and Justice. Sir, I am happy to note that out of the 18 recommendations of the committee, 14 have been incorporated suitably. 3 recommendations, number 1, 3 and 18, were in the nature of observations which have been noted. 1 recommendation, number 2, is to define clear-cut roles of various departments to be reflected in the rules for the effective coordination mechanism. This recommendation also calls for SOPs for deportation and extradition of pirates by the Ministry of Home Affairs so that these could be implemented early, and that has been noted and will be addressed suitably. So regarding the issues raised by the committee, the provision of trial in absentia has been dropped. Keeping in mind the observations of the committee regarding the Supreme Court of India's ruling on awarding mandatory death punishment, the provision regarding death punishment has been amended in the bill to also include imprisonment for life. Honourable Speaker, sir, India does not have a specific law or legal provision in the IPC or the CRPC on piracy. This bill, along with the amendments, would provide an effective legal instrument to combat piracy, not only in our territorial waters, but in the EEZ, but also on the high seas. India's security and economic well-being is inextricably linked to the sea, and maritime security is a prerequisite, with more than 90% of our trade with the world taking place through sea routes and more than 80% of our hydrocarbon requirements being seaborne. The security of our sea lanes of communication is critical to our national well-being. India is also one of the largest providers of seafarers in the world. We are a signatory to the UNCLOS 1982, which was ratified in 1995. The passing of this bill fulfills the expectation of this convention for cooperation in repression of piracies in the high seas. It may be noted that the Honourable Prime Minister had chaired a UN Security Council session in 2021 focused exclusively on maritime security. He had then outlined 5 principles for such cooperation. As such, the passing of the bill today is a logical follow-up of our maritime initiative and will also enhance our maritime security, including those of our trade routes and the welfare of our seafarers in international waters. It therefore merits the consideration and approval of this House. Thank you. So, sir, I rise to move that the
bill, anti-maritime piracy bill 2019 with amendments be passed. बिल का इंट्रोडक्शन taken into consideration. इंट्रोडक्शन हो चुका है पासिंग हाँ ठीक है कंसिडरेशन के लिए Sir, be कंसिडरेशन एंड पासिंग considered and passed. ओके श्री मनीष तिवारी जी Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. I rise to speak on the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. If I understand correctly, the official amendments which are sought to be moved by the government, you plan to amend the title of the bill to perhaps read Maritime Anti-Piracy Bill 2019, which of course would make it sound better. As the Minister was explaining, Mr. Chairperson, that the bill was introduced in this House on the 9th of December 2019, was referred to the Standing Committee on 23rd December 2019. The Standing Committee reported back on the 11th of February 2021, and official amendments were proposed by the government on the 22nd of July 2022. This bill, Mr. Chairperson, provides us an opportunity not only to discuss the legal architecture around, or the need for a legal architecture around piracy, but more importantly also India's interests, India's strategic interests in the Northern Arabian Sea and the Western Indian Ocean, where a majority of India's trade passes through. It would be a trite to say that ungoverned spaces actually create the conditions for pirates to operate. And unfortunately, since 2008-2009, Somalia and Yemen have been in a rather disturbed state of affairs, and so therefore the Gulf of Aden, the North Arabian Sea, the coast of Somalia and Yemen have been piracy prone now for almost a decade and a half or not more. And for India, as the Minister was correctly pointing out, that the sea lanes of commerce, especially the ones which transit through these seas and also the ones which then transit from the Hormuz to the Malacca, really constitute the lifeblood of our global trade. And it was in the year 2009 that when the problem of piracy was really at its zenith, that a combined task force was set up, Task Force 151, 152 and 153. They were established and they were given a mission mandate in order to combat the problem of piracy. 34 nations, 6 countries got together to patrol almost 8.3 million square kilometers of international waters. And I must say that this mission has been successful in mitigating the impact of piracy to a great extent. India, of course, at that point in time, chose not to associate itself with the Task Force 151, 152, 153, which was operating out of the combined maritime headquarters in Bahrain, primarily because of the presence of Pakistan on these task forces. But I'm given to understand, I would be very interested to know from the Honourable Minister that I believe India has changed its mind and now we have decided to associate ourselves with these task forces. So it would be interesting to really understand from the Minister as to why this change of heart and change of mind has really come about. However, Mr. Chairperson, sir, something which is of extreme significance to our national security is the growing Chinese presence in these waters. China has operationalized its port in Djibouti. In fact, a recent report which was given by the Department of Defense to the US Congress on China's military power very, very specifically flagged
the question of China's naval presence, and especially that the base in Djibouti would be able to host Chinese aircraft carriers and other Chinese PLA Navy assets in this particular region in a rather elevated or enhanced manner. Therefore, under those circumstances, more than piracy, it is actually the Chinese naval presence in the Northern Arabian Sea and the Western Indian Ocean which is going to become our foremost challenge. And therefore, I would like to ask, and interestingly, the Honorable Defence Minister is also here, and I had raised this in the Consultative Committee when we met in Mumbai just a week before, that perhaps India needs to really reconsider its forward-basing policy also, because you cannot have a secure Northern Arabian Sea and a Western Indian Ocean if you do not have bases to be able to forward deploy. And China has very, very successfully leveraged its debt diplomacy in order to expand its basing presence around the rim of Africa. So they are exploring bases in Madagascar in addition to various other countries. And I would like to ask the Honourable Minister, India had been in talks with Mauritius. I think we were doing something on the Agliga Islands. We were also doing something with Seychelles on the Assumption Islands. So therefore, it would be interesting if the Minister could throw light as to what really would, in the light of the changed circumstances, the geopolitical circumstances, not only in the Northern Arabian Sea and the Western Indian Ocean, but globally also, is India willing to really reconsider its policy of having bases abroad? And under those circumstances, if it's willing to reconsider that policy, then how really is the situation with regard to what we had in the works, Quay Mauritius and Quay Seychelles? Coming to the specific aspects of this bill, between 2016 and 2020, given that there have been 900 incidents of piracy globally, and India has about 10%, 10% जो लोग हैं जो इस मर्चेंट एक्टिविटी में भाग लेते हैं, वो भारतीय मूल के हैं, क्रूमैन और अफसर, और पिछले 5-7 वर्ष में 500 से ज्यादा भारतीयों को पायरेट्स द्वारा बंदी बनाया गया है। और इस संदर्भ में ये जो कानून सरकार लेके आई है, इसकी जरूरत तो थी और है, पर इसके कुछ अंश हैं जिसके ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर मैंने माननीय मंत्री जी को सही सुना तो उन्होंने ये कहा कि जो स्थायी समिति ने सिफारिशें की थी, कुछ अंशों के ऊपर उनको उन्होंने संज्ञान में लेकर उसमें तब्दीली करने की कोशिश की है। But I would still like to point out certain ambiguities which continue to exist in the law and which need to be further refined, which need to be fleshed out or sharpened, because they are going to become an impediment with regard to international cooperation, which is the sine qua non of our entire anti-piracy effort. Now, if you were to, Mr. Chairperson, sir, direct your attention specifically to Clause 3, which says that whosoever commits any act of piracy shall be punished with imprisonment for life or with death if such person in committing the act of piracy causes death or an attempt thereof. Now, there is an inherent contradiction and an inherent ambiguity in this clause, and let me point it out why I'm saying so. The Indian jurisprudence in the Supreme Court has been extremely conservative when it comes to handing out death penalty. And they have repeatedly reiterated and stressed that only in the rarest of rare cases, death penalty should be given.
I can understand the government's intent to try and deal with piracy with a firm hand, but even Indian law does not permit a death sentence or does not contemplate a death sentence where an attempt has been made which might result in causing death. You see, under the Indian Penal Code, attempt to murder, which is section 307 of the Indian Penal Code, is not punishable by death. So therefore, is the government trying to create new jurisprudence through this law, which then can be extrapolated to other criminal laws, whereby you are proposing that even the offense of attempting to commit murder and the statistics on people getting acquitted insofar as section 307 of the Indian Penal Code is concerned is very, very high. I would seriously urge you that I think either it is a drafting error or it is an inadvertent slip, but this needs to be corrected. I don't think a law, and even in terms of soliciting international cooperation on the question of piracy, if you have a law which punishes an attempt which has been made in the course of a piracy on somebody's life as punishable with death, that is not going to really bring the kind of cooperation which you would perhaps look for while operationalizing this law. Similarly, if I were to come to clause 4 in the bill, now may I, Mr. Chairperson, sir, just read it out. Whosoever attempts to commit the offense of piracy or aids or abets or counsels or procures for the commission of such an offense shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine. Now, Mr. Chairperson, you are a lawyer yourself. We have another eminent lawyer sitting right there who's the Minister of State for External Affairs. Now, I can understand the word aid, I can understand the word abets, but counsels, how can you counsel an act of piracy? I have not been able to wrap my head around the word counsel. That, well, if somebody, aids in an act of piracy, he abets an act of piracy, he procures equipment which then is used in operationalizing that act of piracy, whether it is a boat or it is weapons, it is ammunition, etc. It's understandable, but counsels an act of piracy, I think there needs to be an explanation from the government as to, the minister wants to say something. So I just want to clarify, possibly the member is reading from the earlier version of the bill, because in the official amendment which we have moved, the word counsel is replaced by conspire. So I just want to point it out. I think there is possibly some misunderstanding here. I think possibly the revised version with the amendments has not been circulated, because when our office last checked, this was the only version of the bill, Mr. Chairperson, which was at least available to the members. You may have moved the amendment separately. No. So far not moved, and it has not been circulated. Yes. Not to our knowledge. How we are able to discuss? Honourable Minister, please check whether it has been circulated or not. No. Where? No. And passing in the last session, and at that time it could not reach, and it was circulated. All the official amendments have been circulated to at least to all the. If I have received it, then you must ask. Well, Mr. Chairperson, then I think I think with great respect to Mr. P.P. Chowdhury, there seems to be some special treatment for the Treasury benches, but insofar as the opposition benches are concerned. But insofar as the opposition benches are concerned, when I checked it in the morning, the official amendments were at least not available to us. Honourable Speaker, sir, my understanding is it was circulated on the 6th of December. However, it is corrected now. Mr. Chowdhury, please.
Wait. Honorable Minister, the only thing is, now Minister is... No. Brave, 1 minute. Your point is, notwithstanding the correction made in this House, whether the due process has been taken or not. That is the question. Yes, he is the chairman of the standing committee, unfortunately misleading the House. All the notices of amendments which were given during the last session will lapses on the day in which the House is withdrawn. So that amendments won't give any effect. The amendments have to be given in this session after issuance of the summons by the President of India. Please, Minister. That is our point. 6th of December. No. Minister is categorical that it has been circulated on 6th itself. You want to reiterate it? Please. Chairman, sir, the official amendments were circulated on 6th of December. So it is, what had happened was, I don't How the members who are coming on 6th or 7th, the bill is being taken for discussion. How we are able to go through the amendments and have a forward on these issues. It's very unfortunate. At least circulate among the members. At least the amendments may be circulated among the members, the hard copy. Okay, but point is noted. We'll direct the Minister. No, Mr. Chairperson, I think... No, Mr. I think that we come to end. That it has been circulated. The time is the crux. Time is the crux. Such a delay should not be happening in future, please. No, Mr. Chairperson, please, I don't think... We can continue the debate. No, Mr. Chairperson, Mr. Chairperson, I don't think the delay is the crux. What Mr. Premachandran was trying to say, and I would like to reiterate. The fact is that if amendments are circulated on 6th of December 2022, and the discussion is taking place on the 7th of December 2022, it is not a pro forma circulation which is important, that we've put it on the portal and we've done our job. I think it is also a question of propriety. If you are discussing a bill on the very next day, you should at least circulate the official amendments to the members, because not everybody goes on the portal every day to check as to what government has put on the portal and what has not been put on the portal. So therefore, going back to what I was saying, so if the government or if the minister has clarified that the word councils has been replaced by the word conspire, then, well, that makes it a full provision. Let me come to my next point, Mr. Chairperson. Now, Clause 9 and the proviso to it says that provided where such offence is committed on board a foreign flag ship, such court, which is a designated court, shall not have the jurisdiction to try such an offence unless the law enforcement agency or the public authority of the port or place where the ship is located has been requested to intervene by the concerned state whose flag the ship is entitled to fly, or by the owner of the ship or his master or any other person on board the ship. Now, this has very profound implications. For example, Mr. Chairperson, if there is a ship on high seas on which an attempt of piracy has been made, and there are Indian crewmen or Indian officers on board that ship, and there are unfortunate casualties, and therefore it is the Indian Coast Guard or the Indian Navy which responds to it and takes them into custody, is the government trying to say just because the ship is flying a foreign flag, irrespective of the fact that Indian nationals may have been involved in or may have been hurt in the process, the government or the designated court will not have the authority to try that particular offence? I think there is a clarity required, because if there are Indian nationals and we are actually enacting a law or putting in place a legal architecture with regard to piracy, so therefore it should extend to every ship which possibly has Indian crewmen or Indian officers on board.
My final point, Mr. Chairperson, and I think which is important, is on the question of presumption. This law shifts the burden of proof and actually turns the principle of jurisprudence on its head, that you are innocent until proven guilty. Now, this is not the only law which does it. Even the Prevention of Corruption Act has that, or shifts the burden of proof. However, my concern is that when you are talking about piracy, you are also implicitly talking about cooperation with other countries. Now, if you have a law where the presumption of guilt or the burden of proof has actually been shifted to the accused, and the accused has to be extradited from a third country, that third country is not going to extradite an accused who's already proven to be guilty till the time he doesn't prove himself to be innocent. This is actually going to become detrimental to your larger international cooperation in order to combat piracy, rather than being an enabler. I would request the Minister to really reconsider this particular clause in the light of its practical implications when it comes to implementing it. Finally, Mr. Chairperson, I would just like to conclude by saying that this particular bill, when you look at it in its entirety, is a bill which India requires. But yes, there are certain specific issues which I have flagged, and there are a couple of more, since we are running out of time, which require the reconsideration of the government, because, as I earlier said, they are going to become a problem when the operationalization of this bill takes place. Thank you very much. Thank you. Shri P.B. Chaudhary. Thank you very much, sir. I rise to support the Maritime Anti-Piracy Bill. This bill was in fact needed much before, because the United Nations Convention on Law of Sea, that was Convention of 1982, and thereafter India ratified in 1995. So almost 166 countries are member states. So I would like to, before I start, I would like to refer the speech of Honorable Prime Minister, remarks at the United Nations Security Council high-level open debate on enhancing maritime security, a case for international cooperation. The ocean quote, "The ocean is our joint heritage. Our sea routes are the lifeline of international trade. And the biggest thing is that these oceans are very important for the future of our planet. But today, our shared maritime heritage is facing many challenges. Sea routes are being misused for piracy and terrorism. There are maritime disputes between many countries, and climate change and natural disasters are also maritime domain-related issues. In this broad context, we must make a framework of mutual understanding and cooperation for the preservation and use of our common maritime heritage. No country can make such a framework alone. It can only be realized through a common effort. It is with this thought that we have brought this important issue before the Security Council. I am confident that today's high-level discussion will guide the world on the issue of maritime security." Unquote. So, keeping in view these aspects, I extend my thanks to Honorable Minister that this is a very important legislation, because if we see the Indian Ocean region, almost 50% of the global sea trade and more than 1 lakh of the ships carried through this Indian Ocean region. And we are witnessing, and this from the long time, the robbery or hijacking for payment of ransom, and not only one particular part of the globe. In the sea, the Gulf of Guinea, Malacca, Red Somalia waters, all there are shipping routes. And after 2008, the Gulf of Aden and Seychelles and Mauritius are also subjected to many pirates
and this 2009 to 2019, almost 73 piracy and robbery were committed. Now, because we see that there is no separate legislation in our country, because the jurisdiction problem and there are so many problems, this is the reason that because in the IPC and CRPC, the piracy has not been treated as a crime. And the questions also because one of the case arose in this jurisdiction of the Indian courts, the Alondra Rainbow case of 1999, where the trial court prosecution was successful, but the High Court struck down and overruled on the jurisdictional ground, on the ground that the piracy is not a crime under the Indian Penal Code, and Indian courts are not having any jurisdiction with respect to exercise the jurisdiction with respect to any offense committed on the high sea. So this is the reason. So now question is, why this bill? What is the reason why government is bringing this bill? Because to arrest, investigate, and prosecute and provide the punishment, inflict the punishment, there is no provision in Indian Penal Code and there is no procedure in the Criminal Procedure Code. And this is the reason. And moreover, the word piracy has not been defined under the Indian Penal Code. Therefore, it has not been treated as punishment. The Indian courts are not having any jurisdiction with respect to the piracy committed on the high sea. And there is a jurisdiction problem. And apart from this, it is also a United Nations obligation, because the United Nations Convention on Law of Sea was adopted in 1982 and India ratified in 1995. Since there is no law on that in this area and this field is unoccupied, and for repression of the piracy, this law is needed. So if we go by chronological order, so earlier the bill was introduced before this House in 2012. It was sent to the Standing Committee. Standing Committee reported, it gave its recommendation, and again it was redrafted in 2018, redrafted after consulting this Law Ministry, Shipping, Ministry of Home, Ministry of Defense, Navy, Coast Guard, and legislation has also taken into consideration the law which is prevalent, the law made by the Australia, New Zealand, and Sri Lanka. And we have also taken the guidance from the international this maritime organization. So if we see the objective of the bill overall, so basically it is the foremost objective is repression of the piracy on the high sea and empowering the competent authority for arrest, investigate, prosecute, and inflict the penalty on the guilty. And it is also obligation of the United Convention on the Law of the Sea. And the piracy was not criminalized earlier. Now criminalizing the piracy is also one of the objectives of this bill. And apart from this international support anti-piracy operation by the Indian Navy, it will also help them. So apart this applicability of the bill, so if we, from the coastline, the territorial water, we have exclusive jurisdiction, we can deal with under the Indian Penal Code and CRPC. But beyond the territorial water, in exclusive economic zone, we can utilize and this for the purpose of research and other purposes. But we don't have any jurisdiction and we can't invoke the provision of the Indian Penal Code and CRPC for prosecution and punishment. So that's why this law is needed, and so far as the territorial jurisdiction, it goes up to 12 nautical miles, that is equivalent to 22 kilometers, and exclusive economic zone, that is 200 nautical miles, that is equivalent to 370 kilometers. So in 370 kilometers, we were not having jurisdiction. That has also been treated in the high sea. So we are having the sovereignty. So far the territorial water is concerned, we don't have any sovereignty, and we don't have any jurisdiction with respect to the exclusive economic zone and high sea. And this, if we see the bill, the definition of the piracy is as defined under the United Nations Convention on Law of Sea, adopted in 1982. There are 4 mandatory conditions. If we bifurcate the whole definition in 4 parts, then these are the 4 mandatory conditions.
for this, whether a particular act is this crime or not. First, this crime should be committed for private ends, number one, by any person or by crew or any passenger of a private ship. Number three, the place can only be the high sea. Number four, against another ship or any person or property on board such ship. Now, question arises, if the crime is committed by the foreign ship, by the government ship, that is this non-commercial, and this warship, then it is not included. So if it is a commercial ship, it may be a government ship. I think, to my mind, then this, because this is not clear on this issue, then on the basis of interpretation we can say, even if it is a government ship, it is involved in commercial operation and piracy is committed, then it is also comes under the jurisdiction. So the punishment of piracy, Mr. Manish Tiwari was referring about the committing of the piracy under this clause 3. So far the clause 3 is concerned, clause 3, whoever commit any act of piracy shall be punished with imprisonment, because it has been, official amendment is there, imprisonment for life or with fine or with both. And who causes the death or attempt, then with death or with life imprisonment. So I think this has been, official amendment is on the reason that the mandatory death penalty can't be inflicted. In one of the cases, the Supreme Court has taken the view that the mandatory death penalty is unconstitutional, and reason being, it is violative of Article 14 and 21 of the Constitution of India, that no person shall be deprived of life and liberty except in accordance with law. But law must be reasonable. So the no discretionary power has been given to the court to inflict that penalty, whether that penalty in the given facts and circumstances is needed or not. Therefore, the discretionary power can't be taken away from the court. So in the state jacket formula, if such type of crime is committed, then the court must be given discretion. And this is the reason that I think it is a welcome move by this government, that they have this official amendment is there, that discretion has been given to the courts. So in fact, earlier the court has, region is court has also struck down the article, this section 303 of the IPC, where a convict who is in the prison, serving the prison, if he commit a murder, then that person committed death, then that person is, the penalty is only the death sentence. So that provision has been struck down by the court, that the discretion should be, and some questioning should be there. In the given facts and circumstances, it is for the court to decide whether the death penalty is needed or not. So that is the reason. And apart from this, under the Arms Act, usage of prohibited arms resulting in death, then that provision is also struck down. So, and on the basis of this, some of the cases are also pending before the Supreme Court with respect to the mandatory death penalty on the Act of the SC/ST Act of 1989 and Anti-Hijacking Act of 2016. These cases are pending on this, and the government has this amended, official amendment is there. So the word death penalty has been removed and word or is used, and that discretion has been endowed on the court. Now, if we go by the country-wise, some of the country like Singapore, Thailand, and Malaysia, they have made the provision for mandatory death penalty if death is caused during the piracy. And in America, the punishment is for 20 years. And some of the more countries that no death penalty for the piracy is Kenya, Australia, Italy, and Sri Lanka. My suggestion to this Honorable Minister about this, some of the provision, because I think so far as clause 3 is concerned, whoever commit any act of piracy, I think thereafter official amendment may be brought on it. Act of piracy, this is reference to the act of piracy, but it is not with reference to aids or abet or conspires or procures. Because the action and conspiracy, both should be added, but in clause 3, only the commission is added, not this conspirator.
So this is missing, I think. And second part is second suggestion about it. And whereas in clause 4, if we read clause 3 and clause 4, then in clause 4, if we read clause 4, sir, then whoever attempt to commit the offense of piracy or word, this rightly used, word or aids or abets or counsel, instead of counsel it is conspire, or procures. These words should also be there in clause 3, immediately after the any act of piracy. Commit any act of piracy or. Because this clause 3 and clause 4, they must have the similarity, because in clause 4 the proper words are used, but in clause 3 these are these words of the aids, abets or conspiracy. The conspiracy part is missing in clause 3, which should be there. And this for attempt, this under clause 4, punishment for attempt to commit any piracy or aids or abet, conspire, this is because it can extend to 10 years. I am coming on the punishment. It is extendable up to 10 years or fine or both. But I fear that if any attempt or the commission offense is there, then the use of the word or, it gives too much discretion to the court, that if they can also impose only the fine. Instead of inflicting the penalty, I think too much discretion has been given to the court that even the fine can be imposed for this purpose. And again in clause 5, punishment or for organizing, directing others to participate, 14 years or with fine or both. This I am reading clause 5, sir. Whoever participate or organize or direct other person to participate in any act of piracy shall be punished with imprisonment for a term which may extend to, now it has been reduced to 10 years, and shall also be instead of and, now it has been substituted by the word or, shall also be liable to be fined. So the court can also impose the fine in all cases wherever the word or is used. So we can use the word immediately after the 10 years punishment and word and, fine or both. And finally, this I would also like to refer, arrest of person and seizure of ship, this clause 7, sir. Clause 7 says, this new clause has been added. The clause 7 says, the authorized personnel may either generally or on suspicion that a ship is engaged in piracy on the high sea, board such ship and arrest the person or seize the pirate ship and property on board. I am referring to the official amendment. And in official amendment, the word generally, either generally or on suspicion, because in the main act, the word suspicion we have not treated as a punishment. So if it is a suspicion is not a punishment under the word, when we define the word piracy, then we can't, basically we can't treat it as a punishment. So that's why it can also create a problem. And here they arrest the person or they seize the pirate ship. So we are giving the power to the authority. Either he can arrest the ship or seize the private ship. So if he only sees the private ship and he is not arresting the person, so this power is given, we are empowering the authority, either arrest the ship or seize the vessel, seize the private ship. So arresting the person is not mandatory. He can only seize the private ship and property on the board and finish his job, because he can say very well that I am acting in accordance with the provision of the law. And again, the word suspicion is not there. It has not been treated as punishment. So once we are not treating it as a punishment under the definition of the piracy, then it may create some problem. And about the authorized persons, there is no problem. And again, this
the August about the presumption, because Mr. Manish Tiwari ji has referred about the presumption. In some of the law, presumption, on the basis of the presumption, person can be prosecuted. But no doubt it depends upon country to country. But once the offense is extraditable, then it can be on the basis of the reciprocity. We can bring the accused here and prosecute. But the presumption of committing the crime, unless contrary is proved, we have under the bill, we have given the sufficient safeguards. The safeguard is, but because these are the mandatory safeguards, that the recovery of arms and ammunition. Once we recover the arms and ammunition, then presumption can be drawn. In absence of arms and ammunition, no presumption can be drawn. But so therefore, the sufficient safeguards have been provided under the bill that once the arms and ammunition have been recovered, or those are used or intended to be used, the evidence of force and threat is there, the evidence of intended threat is there. So in the bill, the sufficient safeguard have been taken with respect to the presumption. No doubt the presumption is that presumption of the guilt. So some of the enactment we have in this Prevention of Corruption Act like that, that is a valid enactment. So in this, when we are dealing with high C, so in case we don't draw the presumption, then it is very difficult to prosecute that person, very difficult to collect evidence. But in the bill, the mandatory conditions have been provided and sufficient safeguard have been given and very fine balance have been maintained, that unless there is no recovery. Simply on the basis of this provision, we can't say that only the presumption is there. But for the presumption, to draw the presumption, then the recovery of the arms and ammunition should be there. And those should be either used or intended to be used or force or there is a threat, then only the presumption can be drawn. So therefore, there are sufficient safeguards in the bill. And on the point of the extraditable crime, because it is no doubt and deemed to be any other state on the reciprocity, if there is a reciprocity with the other nations, then we can extradite without any problem. But keeping in view, because every state must have their own legislation. But once we enter into this agreement is there, bilateral treaty is there, then there will be no problem for extradite the crime. Basically, we have treated this crime as an extraditable crime. So on the basis of the reciprocity, there we can bring him back. Thank you very much, sir. And I support that the bill may be passed. Steve, Mehtab. Yes. Sorry. I had requested. For a flight. And especially speaking after two legal luminaries, it is always a difficult part on my case, because I have, though I am been elected to frame law, I have not studied law, nor any degree I have got from the law colleges or university. And second point which I would like to mention after hearing two colleagues of mine, piracy has not been there in the IPC. You yourself know, sir. The Indian Penal Code is just another version of Irish Penal Code. CRPC, of course, was framed in 1948, then subsequently number of amendments. The greatest pirate of this world were Britishers. Why would they frame a law to apprehend pirates? And that is the basic reason, and we have woken up after such a long time that we need to have a piracy law, and Prime Minister raised it in the United Nations. So coming to this bill, I'm really astonished by my predecessor, P.P. Chaudhary, my friend. Perhaps he was also heading that standing committee which went through this bill, and now his number of amendments have been accepted by the government, and still certain amendments have not been. But anyway, he must have gone through in detail, unlike Manish Tiwari, who is very much aware about it. There are certain apprehensions and also certain suggestions which I would like to make in a very brief manner. I would say Indian Penal Code provisions
pertaining to armed robbery have been involved in the past to prosecute pirates apprehended by the Navy and the Coast Guard. But in the absence of a specific law on the offense of maritime piracy in India, problems were being faced to ensure effective prosecutions of pirates. This is the basic reason for which this law has been framed. I would say, under this bill, if a person, while committing an act of piracy, causes or attempts to cause death, he will be punished with death or imprisonment. That amendment has come. Supreme Court has, in Dalbir Singh versus State of Punjab and Mithu versus State of Punjab in 1983, this was in 2006, earlier one, ruled that mandatory death penalty for an offense violates Article 14 and 21 of the Constitution. The court has held that a provision that imposes a mandatory death penalty is arbitrary and unfair. The Supreme Court has, in Vachan Singh versus State of Punjab, also narrowed the application of death penalty to the rarest of rare. He is having only 3 minutes, but however, just warning. Sudden love for you. Sir, this bill defines piracy, and here certain actions may fall on different offences and have differing penalties. And there are 3 or 4 in that line. And I would just mention it briefly. Any illegal act of violence, detention, or destructions committed against a ship, aircraft, person, or property, inciting or intentionally facilitating such illegal acts, or voluntarily participating in the operation of a pirate ship, any person who commits an act of piracy will be punished with imprisonment for life, death penalty, if the act of piracy causes or attempts to cause death. However, another clause in the bill provides for imprisonment of up to 14 years, along with a fine, if a person aids, assists, participates, organizes, or directs another person to participate in an act of piracy. Offences in both the clauses seem to be similar. It is unclear which penalties will apply under which circumstances. For instance, person A directs person B to damage a ship on the high seas. There could be 2 ways in which person A is charged: committing an act of piracy by inciting such act and thus be charged with life imprisonment or death, or directing another person to participate in an act of piracy and punished with imprisonment of up to 14 years, along with a fine. Sir, the next point which I would like to mention is the geographical applicability of the bill. And the minister very rightly mentioned about exclusive economic zone. But India has limited rights in the exclusive economic zone, such as the rights to explore, exploit, and manage natural resources. Currently, certain acts of piracy, such as acts of violence against ship and seizure of a ship occurring in the EEZ, are covered under the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, that is SUA Act 2002. However, the SU Act 2002 does not cover all acts of piracy as defined under UNCLOS. For example, an act of theft that does not endanger the safety of a ship in the EEZ will not be covered under the SUA Act 2002, but this would qualify as an act of piracy under UNCLOS and this bill. Sir, I would not go into the other aspects, but on international law,
UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, is the first comprehensive enforceable international environmental law covering all forms of marine pollution, land-based, atmospheric, shipborne, and originating from activities on the seabed. UNCLOS of 1982 entered into force on November 16, 1994. Although many nations have signed and notified UNCLOS, their number has not been sufficient to bring it into force. Despite the fact that UNCLOS runs 320 articles and 9 annexes, there are still important issues that require further work. For example, controversies exist over overlapping jurisdiction of territorial waters, that is 12 nautical miles, and exclusive economic zone, that is 200 nautical miles. Therefore, my suggestion is the government must review the provision of death penalty for pirates involved in killing or attempt to murder cases in the proposed piracy bill, as the extradition of the accused may be difficult, which my friend Manish just now mentioned. The law must provide for legal immunity for acts done in good faith. My previous speaker just now mentioned if arms is seized, but arms for what? Ship may be carrying arms for their own safety, so that security personnel duly authorized by the government to deal with the problem get protection. International cooperation on the issue of maritime piracy at various international platforms should also be brought. All necessary steps should be taken by the concerned ministerial authorities. Sir, the bill, of course, is a landmark move to combat the issue of piracy at sea. However, the proposed law must be reviewed based on international laws. The provision of death penalty, as I have stated earlier, and I had moved an amendment last session, but I would say must be reconsidered to ensure better acceptance of the proposed law. With these words, I conclude, sir. Sumati. Thank you very much, Chairperson, sir, for having given me this opportunity to speak on this anti-maritime piracy bill. At the outset, I would like to associate myself with the Honourable Member of the Parliament, Dr. Manish Tiwari, to change the nomenclature as Maritime Anti-Piracy Bill. Sir, my story starts at sea, a perilous voyage to an unknown land, a shipwreck, the wild waters soar and heave, the brave vessel is dashed all to pieces, and all the helpless souls within her drowned. Thus, Shakespeare describes the natural calamities and dangers of a sea voyage. But apart from these, the pirates of the sea are the most dangerous threat, who seize, destroy any ship at high seas and sometimes even at the harbors at shore. Also, they are involved in many other illegal activities like smuggling and slave trades. So the sea piracy mafia needs to be dealt with iron fist. And so I really appreciate our government's initiative to bell the cat legally through this bill. So according to the International Maritime Bureau of the ICC, piracy attacks on ships were increased by 20% between 2019 and 2020. India is the largest stakeholder in maritime trade, having our crew and officers constitute nearby 10% of the global seafaring community. And thus it's high time to have this bill passed, and we have a union minister here right now for the external affairs, Dr. S. Jaishankar, who has labored much to bring this bill to see the light of the day. I appreciate wholeheartedly his efforts and hope this will bring sea changes in the Indian maritime history. Sir, the Union is bringing the law as part of the commitment made by India while signing the United Nations Conventions on the Law of the Sea, UNCLOS, in 1982, and the UNCLOS was ratified by India in 1995. I welcome this bill, but would like to draw the attention of this august House through you to some major incidents. Sir, the introduction of this bill comes after some days after 18 Indians aboard
crude oil ship carrier were kidnapped off the coast of Nigeria. Some time ago also, the House would not have been forgotten. An incident had been reported about our fellow Keralite fishermen being killed by the authorities in an Italian naval ship. And since there was a lacuna in the legal system, much had been deliberated and spoken about, and even when we were waiting for the offenders to be punished, they were just let go, which was a very sad thing. And I'd like to bring those things, incidents, to the attention of this August House, because that's how this bill seems to be very, very important. So, to have a separate domestic legislature on piracy, as well taking care of the fellow fishermen from all the states of India is also very, very important. Yes, yes. That's the point I would like to make here. So far, we have to rely on the Indian Penal Code relating to the offence of wartime piracy in India, and the penal codes are only applicable up to territorial waters. Also, the international naval presence in the Gulf of Aden made the pirate to have a paradigm shift to east and southwards. So, everybody's eyes are now up to the southern part. I appreciate the initiative to pass this bill after so much mulling over and discussions from 2019 onwards, as have been pointed out by my esteemed colleagues. However, during the 15th Loksabha, a redrafted bill was presented and it was lapsed. So why I am just pointing out the detailed efforts is, while so much effort have been taken by the Union government, showing keen interest and evident interest to safeguard Indians, our trade and other seafaring activities, sheer neglect has been shown to our Tamilian fishermen throughout. Aren't we the sons of Bharat Mata, as you proudly say? So whenever there is a Tamilian fisherman being attacked by the Sri Lankan Navy, the headlines will scream that Indian fishermen are attacked. Whereas in Gujarat, I won't budge in. Whereas Tamilian fishermen are attacked, the headlines will scream, Tamilian fishermen are attacked. I beg your pardon. But wherein Gujarati fishermen are attacked, then the headlines will say Indian fishermen are attacked. Why this stepmotherly treatment to us? Our Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has umpteen number of times raised this issue, and our floor leader, respected member of the parliament, Sir T.R. Balu sir, also has raised this issue in the parliament. But recently, how many incidents have been, listed? See, 600 fishermen have been killed in the recent times, and thousands of their fishing vessels seized and damaged, more than 600 in the last 30 years. But the government is not taking any stringent laws through legal actions, rather than negotiations and table conferences and diplomatic talks. Also, sir, another important thing is, I would like to bring to your kind notices regarding the Kachativu. Yes. Sir, Kachativu was ceded to Sri Lanka in violation under the 1976 agreement, but without the approval of the two houses of parliament. Diplomatic efforts